Shit, here we go again. कैसे हैं आप लोग? मेरे साथ बैठी हुई है माहून, who's angry. I'm disappointed and Behram's happy कि मैच जल्दी खत्म हो गया था कल रात Yes, को. sir. I did not mind the early night. Obviously, this is going to be a very interesting podcast. It because is. There's not much positive stuff to write home about. Much. Yeah, There isn't any possibility. basically. The first 34 overs were good. That's about it. I would suppose so. That's pretty much Yeah. it, right? But anyway, we will be thorough as always, and as you all know, we will be reviewing the final ODI, the third and final ODI between Pakistan and the West Indies, in which the West Indies pulverized Pakistan. 202 runs. 202. 99 all out. Yeah, 92 all out. 99 में जो पता नहीं क्यों पता नहीं। देखा है वो 99 की शर्ट याद आ गई जो कि हाँ। आप लोग खरीद सकते हैं. खरीद just by सकते the हो way. वो शर्ट बहुत हाँ. कम रह गई अब तो कोई 5 पीस 92 all out. Yeah, 92 all out, 202 run defeat. As I said, it's a pulverization. And the West Indies, this mammoth victory, Yes, sir. ठीक है, allowed them to win the series by a margin of 2-1. This is their first Yes, sir. ODI series win versus Pakistan in 34 years. इनमें से कोई भी पैदा नहीं हुआ था जो पाकिस्तान के स्क्वाड में था. Yeah. नहीं। यार मैं पैदा नहीं हुआ था. हाँ, मैं पैदा नहीं हुआ था. हाँ, हम में से किसी ने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है ये. Yeah. ठीक है कि पाकिस्तान ODI सीरीज वेस्ट इंडीज से हारी हो. And you know 1991 was a long time Yes. ago, as we said 34 years, but that's not it. Not only have the West Indies won their first ODI series versus Pakistan since 1991, but they have also recorded their highest margin of victory versus any test playing nation in this format in ODI cricket. 202 runs. अच्छा माहिन बताओ भाई कि कितनी तप चढ़ी हुई है तुम्हें क्योंकि तुम्हारी ट्वीट्स थोड़ी ज्यादा खतरनाक किस्म की I- ट्वीट्स थी महून की. आज पहन के भी ऑस्ट्रेलियन कलर्स आ गई है वो. She wants to be a winner. I was so pissed. It's not just about being pissed. It's about कि हम हमेशा कहते हैं ना कि आप अच्छा खेल के हारो, सीरीज भी हार जाओ, मसला नहीं है. But when you play like this, and now you have senior players. When you're talking about Yeah. your captain or Babar or Naseem, they are senior players. 10 साल हो गए बाबर को. Rizwan has been around for way too long as well. So when they are not performing and when they come and post match में जब वो stupidity आके अटैक कर रहे होते हैं, that's क्या बोले? मैंने नहीं सुनी. मैंने भी नहीं सुना. Yeah. नहीं सुनते. बताई मुझे तो दो. सुनने यार वाली चीज होती है. ऑनेस्टली यहाँ पे I- पाकिस्तान मैच हारे हैं, यहाँ पे टीवी ऑफ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम फिर ग्रुप पे लग गए. Yeah, वो It's about taking responsibility. He just came and he was like, it's a blessing for us कि अच्छा हमारे पास specialist bowlers नहीं है क्योंकि हमारे top order में एक हमारे ब्लेसिंग ही हो जाता ना हमारे पास तो हाँ, एक बेहतर हो जाता. पानी काफी पड़ जाता. तो हमारे पास टॉप ऑर्डर में ऐसे बैटर्स हैं who can give us overs. Why would you say that? You lost the match. And you're saying that you were in the game for the first 40 overs? No. I mean, you were. I mean, you were much better than them in the 34 overs. अब how? It's not wrong to state that Pakistan initially lose this game in the final 10 overs of the first But innings. you're coming as a captain and you're talking about the bowling, you're talking about the 40 overs. Why are you not talking about the batting? No. वो तो Colaspus Maximus है ना. So, as a it's not the captain- first time. Yeah, we see yeah, this. yeah. It's not the- 92 नहीं, all नहीं, out is indefensible. I agree with her. मतलब आपको वो एड्रेस करना Address चाहिए तो कि करो भाई आप वो. काफी ज्यादा होने लग गया है ये. Yeah. The captain himself is one of the main culprits in this. Exactly. I suppose you should be saying or uttering the words that look, we were really, really poor with the bat as well, despite Yeah. shitting the bed in the death overs of the Yeah. first innings, and we could not apply ourselves But in then- these conditions. But then again, अगर opposition 294 score कर रही है, हाँ. Yeah. तो I mean you've got और आप- quality batters as well, तो Well, आप quality. करीब तो पहुंच सकते हो ना. ऑपोजिशन 294 स्कोर कर रही है और आप 94 भी नहीं कर रहे ना. Yes. हाँ. आप 92 पे ढेर हो गए. Yeah. Paying homage to 1992, I 92, suppose. yes. Yeah. Last time 91 में आ रहे थे. किसी ने लिखा हुआ था, and please don't take this seriously, okay? Yeah. कि the last time Pakistan lost an ODI series to the West Indies, they won the next ODI World Cup. हाँ, ये मैंने पढ़ा. ये 2027 बहुत दूर है यार. बहुत दूर. 2026 भी नहीं जीते. क्या अगर कर रही है भैया? 2026 में ODI World Cup आता ना तो फिर शायद वो stars align. नहीं, I'm just bullshitting. That's not the case. Yeah. Look, the one thing that I will say right now is what I've always said. I feel like Pakistan cricket fans need to somewhat come to terms with the fact that the team is actually really poor. हाँ ठीक है. Yes. They need to come to terms with that fact. लेकिन फिर they have the right to Absolutely. ask the questions Yeah. कि Yes. कहाँ पे मसला है. Is it the Yeah. players Yes. जो कि clearly आपको Yeah. नजर आ रहे हैं they're not up to. They're Yeah. not. They're not up to So, the level. Amir Yamin tweeted something, which obviously, I mean, he's not इतना बड़ा player, आप उनको नहीं कह सकते हो, but his
statement was actually correct कि अगर आप PSL से selection कर रहे हो then at least make the quality of PSL better. वहाँ की pitches, वहाँ की conditions आप बेहतर कर लो. Yeah, these were not ideal conditions first No, of it's all. not. But नहीं, Even नहीं, if shit ideal pitch- conditions are Again, मैं मानता हूँ हाँ. कि shit pitch है, but then the other side of that coin is कि यार you are professional athletes. हाँ. You are Exactly. supposed to adapt to shit pitches as well and play accordingly. नहीं, And this was a complete shit show, right? Like 92 all out तो वैसी, like I said, is indefensible. यार कितनी दफा आप कह सकते हो शिट पिच बांग्लादेश में थे Yeah. हर आप जगह कह याद रहे हो जाओगे. उन्होंने तो नहीं कहा हाँ ये. पर मैं वैसे ही जनरल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में थे आप शिट पिच My point is to Amir Yamin कि you don't want to curate these sort of pitches in the PSL. हाँ not at all Point being is that if your domestic structure, ठीक है, it all comes down to this कि अगर आप we talk about Abdullah Shafiq aesthetically pleasing, we talk about Babar or Rizwan or any other batter, we know that Sayyam Saim, Saim, चलो you? ठीक है, for Saim, all of these players जो domestic में perform करके आए हैं, so then there's something wrong with your domestic ना. just by the way Abdullah Shafiq domestic में perform करके नहीं आया he was brought in too soon क्या एक first class match खेला हुआ था Yes. if I'm not wrong अगर आप उस तरह देखो हाँ तो. तो Still- domestic में perform still करके But then domestic again, he structure. had a prolific start to his test career. Point is, यार, there is a massive gulf between domestic and international, खास तौर पे पाकिस्तान का domestic. हाँ हाँ ठीक है, हाँ but these are issues that need to be addressed at a different point in time, I feel. नहीं अभी तो हमें इस नहीं, मैच को हाँ, cover वो करना तो है. करना है लेकिन मेरी बात सुनो ना तुमने डोमेस्टिक की बात की है कि उस लेवल तक नहीं है ये भी एक पॉइंट आता है लोग कहते हैं कि इन सारे प्लेयर्स को वापस डोमेस्टिक में Domestic भेजो, जाके डोमेस्टिक में जाके वो फिर 100 मार देंगे फिर आ फिर ये जाते कर हैं. देंगे फिर वो आ That जाएंगे is the problem ना. तो फिर वो क्या दैट इज Structure क्या है? वही नहीं है ना. It is a quality issue and a regression issue. We Yeah. cannot, turn a blind eye towards that. Yeah. And this particular loss doesn't come down to any administrative issue either. No, Other Like non- you said, not- the 11 playing there. not हाँ. this particular this loss particular Yeah. series, I don't think it Yeah. comes down to that. लेकिन बट देन अगेन जहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर होना आता है हो चुका है जो शिट शो होना था साल गुजर चुके हैं यार अब Yeah. तो रिकवर कर सकते हो बिल्कुल. What और I यही think है. यही अच्छे प्लेयर्स का बात होती है ना कि अगर आपसे स्कोर नहीं हो रहा आप कुछ करते हो और आप स्कोर करते हो नहीं हो आप टच You reinvent yourself. You Absolutely. try to हाँ. upskill. You are incentivized to perform, Yeah. not just for Pakistan but Yeah. overall for your own career. Yeah. You know, if you do better at the international or in the international arena, Yeah. then you get more lucrative offers elsewhere as well. Absolutely. So obviously इसमें players की बहुत ज़्यादा responsibility and they need to hold that accountability as well. And I can understand your angst. ठीक है? You are pissed because you did not see the captain addressing the absolute shit show with the bat and the fact that Pakistan weren't able to apply themselves, right? और apply तो दूर की बात है ना. They weren't even able to compete in this match, right? compete भी दूर की They, बात they है are blown to shreds. They are blown to smithereens. Yeah. ठीक है हाँ. एंड ऑब्वियसली जो फैंस डिसअपॉइंटेड है आपको पूरा हक है हक है. टू ऑल्सो बी वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस Yeah. थिंग 100% हक है आपको आप अगर तपे हुए हो आप ठीक तपे हुए हो बट राइट नाउ at this table we need to kind of put ourselves or lock ourselves into a bubble where we can actually focus on this game because there's a lot of West Indian performers that need to be talked about. There's a lot of strategy stuff. There's a lot of Pakistani performers to talk about. what performance हाँ what performers is correct yeah. ठीक है but anyway एक मैं जो चीज जिससे शुरू करना चाहूंगा there were a few people on Twitter who were very angry and they were saying कि Rizwan should have never opted to field after winning the toss. I don't know man I don't know about that. No, Both teams had yeah. one chasing and even if it's a used surface ठीक है you'd back yourself to chase a paltry total I suppose. then again आप मतलब you had restricted them Yes. Yeah. 34 overs आप तक you ठीक were जा रहे थे. way ahead of the game I don't think it was a toss thing honestly. और मैं भी शायद फील्ड ही करता. So when you lose तो सब लोग हर वो चीज पॉइंट यार मुझे पता है लोगों पे क्या चीज मुझे उनकी समझ नहीं आती. You know Saad and myself. Even when Pakistan win, whoever is captain in Pakistan, we double down Yeah. and we are very very क्या कहते हैं nitty gritties में पड़ जाते हैं हम when it comes to captaincy. Rizwan's captaincy overall in this game wasn't the reason why you've lost. No, yeah. ठीक It है? was fine. it was the quality of the players अगर आपने they didn't step up Yeah. overall बात करनी है that Pakistan in 2025 have only managed to win 2 out of 11 ODIs. उसके अंदर और बहुत ज्यादा मैचेस है इसी सीरीज के अंदर. If you look at the previous 2 games, Rizwan makes mistakes. Yeah. This is a weird one. In this match where you've lost by 202 runs and you've been bowled out on 92 or 492, Rizwan makes minimal mistakes. As a captain. एक आधी थी एक आधी थी ठीक है but if you look at it overall right he uses Hassan and Naseem Smartly. throughout in the power play Yeah. they bowl 5 each Fine. I would have done the same thing ठीक है he brings
तलत एंड अब्रार, चलो तलत को ट्राई करना था, कर देख He was लिया. fine. हाँ, तलत एंड अब्रार come immediately after the power play. That's all good. ठीक है. They burned through, or Rizwan and Pakistan burned through their reviews within 11 overs. The second one, I would have reviewed too. Yeah. ठीक है, एक गलत रिव्यू की है, मगर दूसरा वाला यार मुझे भी लग रहा था कि कहीं यहाँ पे एज तो नहीं है. वो तुम साथ देख I'm not going to blame for that. I was happy with the field settings. I didn't see any issues. I saw Slipper very frequently attacking field settings. थी, ठीक है. Rizwan, in essence, completed the fifth bowler in 29 overs when Pakistan were on top. ठीक है. ये भी देखो आप. It was a good move to continue to bowl Saim. उसने कोटा करा लिया था. Fifth over was complete, but he continued to give Saim Ayub overs, and then he removed Rutherford as well. Saim bowls 8 overs straight in the middle overs. ये भी अच्छी कॉल थी. Rizwan brings back the seamers at the 34 over mark because वो बॉल एक रह जाती है सिर्फ. And we saw hints of reverse swing We there. saw- जो Naseem ने Naseem bold का मारे, वो that was था. reverse swing. We saw a fair bit of reverse swing, Totally right? good That was also a good call. I think for the most part, 95% of the game, Rizwan rotates his bowlers brilliantly. Yeah. There is one glaring mistake he makes. No, Nawaz. At the death over, or in the death overs, you're done with everyone else. All you need to do now is bowl out Abrar, Naseem, and Hassan. Yeah. And wahan pe you give Nawaz an Nawaz. extra over. No. Nawaz concedes 2 sixes of the first 2 balls. I think he concedes what 15 runs. 15 in that runs, over. ये एक गलती करता है वो, मैं मानता हूँ. He should have bowled Abrar out because Abrar was the best performer of the day Yeah. for Pakistan, and with the ball particularly, Yeah. he was the pick of the bowlers. Yeah. और वो नहीं pick हो रहा था. Read ही नहीं हो रहा था West Indies नहीं से. हो रहा था. He should have bowled his quota, and Nawaz shouldn't have bowled that extra over. over. But then Abrar goes for 15 in his next over. Next over. It is not a decision, or it is not a mistake. That one mistake that he makes, basically, that doesn't cost you the game. You could be, for instance, you could be Zimbabwe. You could have the best captain in the world. He could make all the right calls. You could lose. आप ये नहीं कर सकते यार कि ओ पिट गए एंड में तो कप्तानी की गलती है. सोचो तो सही थोड़ा सा. नहीं, Players. मेरे लिहाज से डिसीजन ऑन फील्ड वर द करेक्ट हो. Yeah, मसला पता है क्या? That's the player quality है. Yeah. it is. अब नसीम के हम स्टैट्स निकाल रहे थे. And player application. अब क्वालिटी फिर थोड़ी बहुत बेहतर होगी, मगर एप्लीकेशन बिल्कुल ही जीरो. नहीं, मैं बताता हूं ना. एग्जीक्यूशन पे तो 0 नंबर. अब नसीम शाह ने अपने करियर के हाईएस्ट जो इकोनॉमी रेट कंसीड किए हैं ना एक गेम में, हाईएस्ट रन्स कंसीडर वो 2025 में 72 70 68. Yes. There's a glaring problem over there. There's a glaring problem over there. So when your death bowlers with a reverse swinging ball are shit, that is not the captain's mistake. Mistake. एक गलती की है उसने. मैं भी मानता हूँ यार, मैं ना देता नवाज को extra over, I would have bowled Abrar out. Maybe Abrar would have conceded 15 in that over too. ठीक है, but that's not the point. Yeah. The sensible thing to do was कि मैं अब्रार से सारे करवा लूं. अब मैंने that's सारा great. काम कर लिया. ठीक है, I think giving Saim an extended 2 over spell, उसी spell के अंदर वो जो 6 overs का था वो 8 का किया, that was a good move. That was smart, yeah. Everything was on point from a captaincy perspective apart from the Nawaz error. मैंने सारे गिनवा दिए आपको. Tell me if you disagree with these things. अच्छा, जस्ट बाय द वे, हम जब मैच देख रहे थे तो हमें लग रहा था हुसैन तलत 2 ओवर करवा लिए काफी. आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक. हालांकि उसने कंसीड नहीं किए, Yeah. लेकिन आई थिंक वहां पे उससे हुआ क्या, उससे नवाज का एंट्री पॉइंट थोड़ा और डिले हुआ. Yeah, I suppose so. ये एक हो सकता है ये पॉइंट कह सकते हो तुम कि maybe 2 overs too many from Hussain Talat, but then you're also trying him, and then when he does come back for those 2 overs, he concedes 7 runs. runs, runs, yeah. ठीक है. मैं वही कह रहा हूँ ना, उस तरह इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे इफेक्ट ये हुआ जरूर हुआ है कि नवाज थोड़ा लेट है. Sure. हाँ. मैं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ यार कि मे बी आप शायद 5th बॉलर इशू से इतना पैनिक हो गए हो कि आपने जल्दी ओवर्स निकलवा दिए, मगर इस सिचुएशन में वो सेंस मेक कर रही थी No. चीज. Yeah, ठीक है. yeah. I agree with it. Yeah, like I honestly do not understand fans who are like, oh, poor captaincy की वजह से West Indies scored 294. Shit, death bowling No. by 2 senior pros No. has cost you, you know, all of those runs in the death overs, right? And that is not up to the captain. Rizwan बेस्ट कप्तानी कर ले, वो फुल टॉस से करा दे, वो कुछ नहीं कर सकता वहां पे. और फिर कहता ओ इसलिए आज तो फिर आप कभी भी कैप्टन पे ओनस ही नहीं डालोगे अगर कोई विकेट्स ना ले पाए, कोई रन्स ना स्कोर करे, कोई कैच ड्रॉप कर दे. Strategies. हाँ, मैं नहीं दूंगा उसको. You guys look at captaincy as this all-encompassing thing, and I agree that cricket is a sport जिसमें captaincy probably matters most. Yeah. But yeah, you look at the strategic things. Yeah. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि Rizwan is a great captain with no flaws. In this very series, if you look at the 2 reviews, previous reviews, even in the game that Pakistan won, we were critical. Yeah. मैं वाकई समझता हूँ कि he makes the least mistakes as captain in the 3rd ODI. That's what my cricket acumen tells me. Yeah. So yeah, it's quite stupid how this has become the conversation. अगर आपने overall बात करनी है, 2 wins out of 11 ODIs in 2025, I'm with you. He has made many errors. If you're telling me that captaincy has cost Pakistan the 3rd ODI in which they're bowled out for 92 and concede 294 runs where they shouldn't have even conceded 220, Yeah. I disagree with you. Simple.
They shouldn't have conceded 220. They scored 70, 80 more runs वही than तो मैं what they कह रहा should हूँ। have scored. 220 से ऊपर मैं सोच भी नहीं सकता था। चलो ये हो गया ना, ठीक है, बॉलिंग में शिट शो हो गया। एब्सोल्यूट शिट। उसके बाद जब बैटिंग आती है तो फिर प्लेयर्स क्या करें? बैटिंग में तो यार अब क्या ही बात कर सकते हैं। Rizwan the batter has been disappointing. Very disappointing. All of Babar, them. Abdullah Shafiq, Who has been Saim impressive? Saim चलो, I'm Less willing to give him a critical, yeah. मतलब longish rope. इस मैच की मैं हाँ, इस बात मैच कर में रहा तो हूँ था ना, क्या करोगे आप? सलमान लियागा was your best batter. He was your best batter और नवाज was your best हाँ। batter. Pick your poison. उन दोनों में से एक ही बनता है, ठीक है? So मैं फिर वही कह रहा हूँ, it's this team, these players are toast. You need to get rid of them for a while. all of them. All of them. For all of them तो नहीं, उसमें all हसन the नवाज, हसन नवाज, हसन नवाज, हुसैन को नहीं कर सकते आप। keep Hussain, Talat Sufi, Mac, Abrar Ahmed. You Yeah. keep these guys. You keep Saim Ayub. Let me give you a counter argument. We don't even know when Pakistan will play ODIs next. South Africa. South Africa. जरूरी तो नहीं, अभी हमें डिटेल्स नहीं नहीं पता। South Africa नहीं, South most Africa. probably है. Ireland वाली ठीक है। skip कर रहे हैं ना, Yes, तो I South know Africa that वाली। when they decide to not play Ireland this year and then they postpone that series indefinitely, right? T20 वर्ल्ड कप के बाद भी ये ओडीआई स्केड्यूल करे ना, फिर भी 1.5 साल है बेना। My point is that there is a format that they're not even playing enough, and this is the same format जिसमें जो आप रिजवान के पीछे पड़े हो, पिछले साल ही आप 3 सीरीज ऑन द बाउंस जीते हो। Don't you think कि this is a wake up call कि हाँ थोड़े और ओडीआई स्केड्यूल कर लो अगर आपकी इतनी शिट शो है? ये अब तुम अब आए हो ना, हाँ तो सही लाइन बचा लो हाँ, अपनी क्रिकेट को। और अगर आप ज्यादा स्केड्यूल करते हो तो फिर यही प्लेयर्स खेलेंगे, ये बेहतर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं रिग्रेशन। Regression. देखो, to be absolutely certain, I would give them another series. Yeah, I would. I wouldn't. I would not. I wouldn't. I would ये मैं not. काफी अरसे से कह रहा हूँ, I think they're mentally toast. हाँ। Mentally उनकी toast टेक्निक होंगे। तो फारिग हो ही चुकी हो, वो एक अलग बात है। Mentally उस पे मैं नहीं आ रहा, they are finished at they this can't point. recover. I want to see them play in conditions which would be similar to 2027 South Africa. It doesn't matter. Yeah. Because doesn't matter. In those conditions, this team has done well. अगर वहां पे स्लो पिच आ गई तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये रोना डालेंगे कि यार ओ कंडीशंस नहीं, नहीं थे। आपको स्लो पिच पे तो बेहतर होना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं कह तो रहा। मैं वही कह रहा हूँ I'm ना। just saying that इस वक्त आपके पास सारी रिप्लेसमेंट ऑप्शंस भी कोई इतनी खास नहीं पड़ी हुई। You just build a new If team. you're losing with them, Yeah, better lose with I'm them. willing to हाँ. lose with a new team. Yeah, same. ठीक है, चलो, you guys have your own opinion, I have mine. People who are watching this will probably have your opinion. ठीक है, but यार देखो, ये बात नहीं होती ना, अभी 2-3 सीरीज होती हैं या कुछ होता है, ये कौन 2023 से लगा लो यार, 2023 Too to much. 2025 2.5 साल हो गया। बहुत ज्यादा हो 2.5 साल हो गया। बीच में इधर उधर परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की आती रहेंगी Yeah. थ्रू आउट आवर हिस्ट्री। हमने ये देखा If they है, यू कैन नेवर बी डाउन एंड Down, आउट हाँ. एंटायरली। देखो, होता ही है ना कि पाकिस्तान generally do well in shit bilaterals, ठीक है, especially shit bilateral ODI series, and they shit the bed in ICC tournaments. That's been happening for a अब bit तो now. consistent हो गया थोड़ा। But what's happened over here is that Pakistan have basically just self-destructed or imploded in a shit bilateral ODI series. Yeah. जो कि, by the way, it wasn't, you know, it was very important for the West Indies. Yeah. They are reeling at number 10th, or were reeling at number 10th in the rankings, Yeah. and they want to directly qualify for the 2027 ODI World Cup. And they stepped up. They stepped up. They knew what was at stake, and they are now number 9. And they are still like, abhi kuch idea nahi hame how things will go. Yeah. But they want to give themselves the best possible opportunity to qualify for that tournament. That's why they were hell bent to have the series in the first place. और आपको जो आपने PCB ने, They were justified और Yeah. मुंह पे पड़ी है PCB को इस बहुत बात। अच्छी। I don't understand. The PCB were hell bent not to play ODIs. Now you know why. You probably should schedule some more ODIs, right? But I still feel out of all the 3 formats हमारी टीम best suited ODI के लिए ही है। Probably. Yes. Yeah. तो सोच लो I feel ये like क्या है the हमारी thing team? is, I feel like the T20 team has started to show potential. It's So over there, हाँ shown signs वहां पे ना there is a glimmer of hope that okay, this can be a competitive side. ODIs में the scoring rates have died. ठीक है, let's be real, मर गए हैं, बिल्कुल ही मार के ठीक है, और that is a major concern because when it comes to South Africa, I am guessing वहां पे तो 300 पार होगा, 300 of- mostly. हाँ। 100%. कम से कम हाँ, 300 चाहिए 300, होंगे हाँ। आपको, 300 से नीचे चेस हो जाने हो आपके जाएंगे, टोटल्स, ठीक है, so that I think is the biggest thing that they need to look at. Look, I know you guys are obviously pissed and आपका बनता भी है, और जो देख रहा है उसका भी बनता है। I'm not pissed at all. मैं अगर टीम बना रहा हूं ना, मैं देखता हूं कि कौन सा प्लेयर कितने अरसे तक नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। मेरे लिहाज से टेक्निक तो सबकी, आपको बाबर की टेक्निक में फ्लॉज नजर आए, अब्दुल्ला की टेक्निक में पहले भी थे फ्लॉज। Yeah. वो एक हद तक होता है, टेक्निक आप रिकवर कर ही लोगे कभी ना कभी, क्योंकि आप पहले पता खेलते नहीं, आ रहे you हो, never know. फील आ जाएगी कभी। I'm not sure.
लेकिन अगर जब आप आप क्वालिटी हो तो फिर तो कर लो ना. if you believe you're a good player, then you recover. I We have seen people the, doing that. the opposite argument to that is that once you found out, you found out. Found out technique आप recover तो कर सकते हो कर ना? सकते हो in हाँ, theory, कर पाते हो कि नहीं वो अलग वो बात एक है. तो मैं यही वो कह उस पे रहा हूँ तो ना, पहुंच है. मेरे लिहाज से जब आप मेंटली फ्राई होते हो ना तो उसी My टीम point is एनवायरनमेंट that. में रहना आपके लिए और टॉक्सिक होता And जाता it doesn't help you as a player I either. don't understand कि ये क्यों होंगे इस वक्त mentally fried because it was a fresh new management. क्यों नहीं? Mike It's not Hesson, about Mike that. Hesson's It's not- first assignment as a ODI है. coach. It's not Does not about the matter. management, it's about the players. It's about the player. Their मेरी और mindset. तुम्हारी लड़ाई हो जाए ना तो फिर नोमी को ले आओ, जिस मर्जी को ले आओ, लड़ाई हमारी हुई भी. हाँ, Yeah. that's the समझ point. रहे हो? Khair, either way, everyone will have their own opinions. Let's get started by talking about this game. क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है. रात को भी मैं इसलिए खुश था early night because I'm traveling today. Yeah. ठीक है. और And सोए तुमको फिर भी 5 बजे हो सोया मैं जाओगे. फिर लेट हूँ बहुत and आप लोगों के लिए मेरी वेकेशन नहीं होगी. You will continue to see me on your screens because Yeah. we've recorded in bulk. But yeah, I mean I've got shit to do today, right? So anyway. आगे चलते हैं यार. पहले team changes की बात कर लेते हैं. There was one change each for both teams. The West Indies made a good one, I think. Yeah. They bring in Romario Shepherd for Jediah Blades. जो कि पता नहीं क्यों स्क्वाड में भी उनके Yeah, क्यों Jediah है. Blades का निकलना बनता ही था. I That haven't was a seen good call. anything from him. They gave themselves a bit more batting as well with Romario. I don't know, Mario was decent with the ball. Yeah. He was very good with the ball. उसने 10 over, नहीं 5 overs. He bowled 5 power play overs. He gave away 10 runs. Yeah. ठीक है. अब ये Romario है, Yeah. who we don't even rate with the ball. Two made it. Right? पर खैर उसका बनता था Jediah Blades का बार जाना Romario को नहीं. Perfect change. I want to ask you guys. Naseem Shah comes in for Shaheen, and we know why this has happened. Yeah. Yeah, We how called we it. discussed it. discussed Yeah. it. हाँ. We called it. I remember मैंने कहा था कि लिखवा लो मुझसे कि 2 ODIs each खेलेंगे Naseem, Shaheen and Hassan Hassan, Ali, yeah. and that's what happens because that's what Mike Hesson's psyche was. कि मैंने तीनों Try pacers करने. को Try 2 करने. games देनी है. So it doesn't matter how someone performs or anything. I just want to play all 3 2 games each. Yeah. That's what happens. Shaheen goes out. Naseem Shah comes back in. Yeah. Would you guys have done the same? अगर मैं नहीं. माइक हैसन वाली थॉट प्रोसेस रखूं तो इट मेक सेंस टू मी. Yeah. अगर सीरीज जीतने वाली बात है या फिर मैच शाहीन जीतने को. वाली है, आई वुड हैव प्लेड would have played शाहीन. Shaheen. आई वुड हैव टेकन आउट हसन अली एंड ब्रॉट इन नसीम. दैट्स व्हाट I would have done. Yeah, I think that probably would have made the most sense if you are going for the series win. But then again, I don't entirely disagree with this thought process. I want to try everyone out, give Yeah. everyone ample game time. Yeah. But enough. इसीलिए मैं कह रहा Enough हूँ game ना, time. it does make sense Yeah, to me. but Shaheen Shah Afridi, out of these 3 seamers, is still the best. Yeah. इसमें भी कोई शक He नहीं. just got lucky. नहीं ठीक है. खेला था. हाँ. और यार उसको छोड़ो. Seriously. I want to take this conversation to the genius of Ian Bishop. Oh my god. We Yeah. have seen him give nuggets of information that no one could ever even imagine in the past. Even in this series, Hussain Tallat की पूरी history में निकल पड़ा था. So Ian Bishop tells us something in this game, third Yes, ODI, sir. that we didn't even know. Yeah. I didn't know at least. आपको शायद पता. मुझे भी नहीं पता. ठीक है? कोई आइडिया नहीं. As a kid, Shaheen Shah Afridi has broken his left elbow thrice. Thrice. And because of that, there has been some sort of calcification in his bones. Yeah. Literally, it's the word. बोला ना calcification. हम दोनों के कान खड़े हुए हैं. मैं ये शादी क्या? को देख रहा हूँ, हम दोनों बहून को देख रहे हैं. नहीं, हम नहीं कर सकते ब्रो ये. भाई, मतलब ये जरा ज्यादा हो गया. ये And बिशी का लेवल थोड़ा जरा. Ian Bishop is the best in the business when it comes to these sort of things. So because of that calcification of his bones or elbow or whatever, and the fact that he's broken it thrice as a kid, every time he bowls, he does feel the pain and he plays through the pain. और उन्होंने फुटेज भी दिखाई थी Yes. बॉल उठाने जब गया था तो अपना एल्बो फील कर रहा था. So this is something that we haven't even ever considered with respect to Shaheen Shah Afridi. We didn't know हम that. घुटने की बात करते हैं, रिहैब की बात करते हैं, किस तरह अब प्रेशर घुटने पे नहीं, now the pain points और लोड सारा पड़ गया हिप पे या बैक पे. That's what we talk about. We're not even considering the elbow which has been broken thrice and there's been this calcification and he's playing through pain all the time. So what I'd like to point out over here is कि जो ये FCs वाले लोग टारगेट करने लग जाते हैं, you guys don't even know half the shit these players go through just to Absolutely. put themselves or their bodies on the line out there in the field. यार ऑनेस्टली कभी जाके गली में क्रिकेट खेल के देख लो तो हाँ, पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम. ये- shit तस्वीरें वो चल रही थी ना कि दिन को तो दुख भी नहीं हो रहा, ये तो हंस रही. That's ऊपर से यार लोग कहते हैं कि ओ ये एफर्ट नहीं कर रहा है, his commitment levels are low, that's why he's not cranking it up to 145. Yeah. Dude, he can't bowl 145 anymore. Yeah. That's what's happening over here. Effort तो होगी, उससे पेस नहीं निकल रही. इसका ना एटीट्यूड से ताल्लुक है. मुझे भी ये समझ नहीं आ रही ठीक थी है? बात कि मतलब आप जो मर्जी हो पेस तो उन चीजों से रिलेटेड नहीं है ना. वो तो आपकी
बॉडी में जो हो रहा है उससे रिलेटेड है। आप related है। तेज तो फेंक सकते हो जितना मर्जी फेंकना चाहो, अब आपकी लिमिट ही अगर वो है तो आप क्या करोगे? वो तो Absolutely. लिटरली फिजियोलॉजी है, नथिंग हाँ। एल्स। हाँ, अब वो Pace से का क्या ताल्लुक है he इससे? he can't crank it up to 145 clicks. This is not a commitment issue. This is not an attitude It's a problem. reality check. This is what his body is now. Yeah. That's it. आप बात कर सकते हो लाइन एंड लेंथ Length, नहीं उसकी ठीक हाँ। हो रही, वो हाँ। नेट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आई अंडरस्टैंड, बॉलिंग Yeah. सही नहीं हो रही, फुल टॉस से हो रही है, ये हो He's रहा है। not using his brain हाँ। enough. All of these things, I understand. लेकिन When it comes pace to pace, अगर वो मार सकता होता 145 वो क्यों नहीं clicks, मारेगा? वो ना मारता क्या? He क्या stupid बातें? So I समझ actually, नहीं आ रही। you know, obviously we love Ian Bishop as हाँ। both a caller Yeah. because he's one of the best the game has ever हाँ, seen. फिर से and a बोलूंगा वो। researcher, bro. Remember the name, हाँ। right? Yeah. Researcher even more so हाँ। because he does so much homework. Data वाले बंदे के साथ बैठा होता है. He knows the backstories of all these players. But you know what I love most about Bish? And I've met him twice. We've had conversations. We've had some deep conversations as well. एक दफा जो मैं अब जिक्र नहीं कर सकता पॉडकास्ट में, मेरी अपनी शायद जान खतरे पे चले जाए. या तो मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा. अब Because ये मैंने सुनना है he तुम्हारे asked जाने me, से पहले। he asked me some really tough questions about Pakistan. हाँ, चलो ठीक है। बाद में। So, my favorite thing about Bish is that he humanizes players. आ, That's what it is. Such a big thing. हम यहाँ पे बैठकर फुल क्रिटिकल होते हैं, आप भी होगे, हम होंगे भी इस पॉडकास्ट में. on But their let us game. not forget that these are still human beings. अच्छा मजे की मैं बात बताऊं, मैंने शुरू में बोला था बेराम इज हैप्पी के मैच जल्दी खत्म हो गया, सबसे ज्यादा तपा भी वही नहीं हुआ। वो मैं तपा हुआ नहीं हूँ. मैं वाकई मैं I kid you not, I was like the game is done. Please end it early because Yeah. look, I am traveling, I had to pack. ये फैंटेसी वाली सारी चीजें आ गई थी जो कि by the way हम किसी से फैंटेसी खेल नहीं रहे, हमारे अपने दोस्तों में एक नहीं problem है. नहीं, प्रो स्पोर्ट्स की फैंटेसी प्रीमियर लीग है, कोड शोड मिल जाएगी। साथ क्या खेलेगा, बात साथ क्या खेलेगा। बात कर रहे हो यार तुम, मैं इतनी लोगों को चीजें नहीं कर दूर सकता. दूर भगा रहे हैं यार नहीं ये। प्रो स्पोर्ट्स की तो आ चुकी है, जानीस का तो आ चुका है. नहीं जानिस की भी आ चुकी है और आप लोगों के लिए भी सेपरेट आ चुकी है सबके यार, लिए आ तुम क्यों चुकी है। गुमराह कर रहे हो उन लोगों Sorry, को? So, हाँ। Behram, गुमराह when you कर रहा talk about humanizing players, that's what Saad's point was. Ki they need to be out because psychologically they are fried. They need a different environment हाँ. is what I feel. My point is, they've gotten enough rest. They've been It's dropped. not about रेस्ट rest. की बात नहीं है ब्रो, It's टीम deeper than that. टीम It's- एनवायरनमेंट की it's बात है। हाँ. हम दोनों फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हमारी आज लड़ाई हो जाती है, ठीक है, वो पॉडकास्ट में सबको नजर आ जाएगा। हम महीना पॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम वापस आएंगे, वो पॉडकास्ट में फिर सबको नजर आ वो जाएगा कि feel हो है जाता कुछ है। टेंशन है, Yeah. समझ रहे हो तुम, वो टाइम अपार्ट से नहीं होता वो। खैर, एक चीज- they properly need shrinks by the way. They definitely do. I think everyone needs therapy. ठीक है? Don't And call at us least students. everyone can benefit from therapy. हाँ. I say this as someone who has taken therapy himself. ठीक है? But yes, That's maybe just too maybe much some sort of toxicity. sports psychologist would work. But then again, यार, मैं बार-बार आऊंगा उस बात पे. There is a quality issue. There is a quality Quality. issue. क्यों There हम is- इसको साइड स्टेप नहीं कर सकते? अच्छा मजे की बात है, तुमने थेरेपिस्ट की बात की है, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट की, लाए थे ना 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में। बाबरी साहब. हाँ. वो थोड़े ज्यादा टेंशन में थे इन लोगों से, उनकी तस्वीरें आ रही थी, वो टेंशन में बैठे हुए। मैंने कहा See, it's about कि sports psychology आप आ रहे हो, then you need a psychologist because again you need to understand how stressful this is. जब ये लोग सीरीज खेलने जाते हैं when they are playing in Pakistan, 1.5-2 महीने के होटल से बाहर नहीं निकलते हैं, and ये बड़ा आसान और बड़ा luxurious life feel when you live that life ना, it's shitty. Yeah, honestly, despite that, Yeah. I know what you're saying is very very key. Yeah. कि आप होटल के कमरे में बंद हो. आपको चाहिए, you need ठीक to है. be there जिससे आप बात कर सको, so everyone needs psychologists and they actually do need, क्योंकि it's a stressful job. 100% agreed, but Toxic it's environment. not just being locked up in hotels. Cricket is non-stop. Cricket is Cricket is non-stop. Cricket is non-stop. You don't see your families for like ठीक है? months. Cricket is not football where the season ends and now you Yeah. have some time off, Yeah. or Christmas break आ गई and you No. have a week off. ईद पे भी खेल रहे होते हैं Cricket भाई. doesn't function like that. Cricket doesn't care about holidays. Yeah. Cricket में इतने different cultures involved हैं कि कोई जगह Boxing Day मना रही है, हाँ. तो कोई जगह कोई और चीज मना रही है. Lord's Test एक अलग चीज है. Yeah. It is constant and you barely get any time off. It is tough work being a cricketer. But then again, That's their job. I feel like Yeah. वो professionalism जहाँ पे आता है, every cricketer goes through this. Everyone does. Exactly. ये कोई पाकिस्तान टीम के लिए एक्सेप्शन तो नहीं है। Exception They're not नहीं है. exclusively going through all of this, हाँ, ठीक है? हर जगह टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा, हर होगा जगह भी. कोई ना कोई मसले होंगे. बाकी दुनिया के क्रिकेटर्स वो 2-2.5 महीने IPL खेल कर आते हैं. IPL खेल You think कर that's not grueling? हाँ. Of course it is. It is, but ओ, आपस में उनके नहीं फटे होते होते होंगे होंगे, ड्रेसिंग रूम में, सबके हर एक होते के होते हैं, होंगे. जहाँ पे आप कुछ करना चाह रहे होते हो वहां पे डिफरेंट Yeah. ओपिनियंस आते हैं और फटे भाई होते शादी हैं, दे ऊपर- ओवरकम दैट। ऊपर नीचे तो मेरी तेरी भी हो जाती हाँ. है, ऐसी बात नहीं है. But point is that ultimately you and I are most concerned with the success of pro this, sports हाँ. and this show. Yeah. So we will always bring out our best foot forward. मेरा पॉइंट यही है ना, ये लोग
ना तो अपने गेम अप कर रहे हैं ना तो ये चीजें आप कर रहे हैं, you know, ना वो mentally तेरे को वो अपने कोई आप को उतना सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। See, your quality also regresses if you are mentally not fit. वो तो Sure, है। obviously, but 100%. I feel like I think it's- despite all of the psychological stuff, which I am not underplaying, Yeah. मैं disagree कर ही नहीं रहा आपकी बात से. I am saying that there is a bit of a quality issue. Yeah, and 100%, 100%. that is at the forefront of everything. That I is- agree with that. मैं भी यही कह रहा हूँ, फोरफ्रंट पे इनकी क्वालिटी Quality इशू ही है, है। लेकिन ये भी एक फैक्टर है। अब scapegoat ढूंढने से कुछ नहीं होगा. मैं यहाँ मानने को तैयार हूं कि in these 11 ODIs that Pakistan have played in 2025 and they've managed to only win 2, Rizwan has made many mistakes. Oh, plenty of mistakes. But you cannot convince me इस वाले that ODI. Rizwan's captaincy cost you the third ODI in Taruba. हाँ, ये वाला मैच जो है ना, 202 रन की डिफीट रिजवान के ऊपर नहीं है, उसकी कप्तानी के ऊपर नहीं है, कप्तानी, उसकी हाँ, बैटिंग की अलग बात कप्तानी है। के ऊपर नहीं है, बैटिंग पे तो मुझे लगता है सबकी ऊपर एक ही गलती है। की है उसने, मैं भी मानता हूँ, मैंने उसी में पॉइंट आउट किया था. I sent out a tweet or posted a tweet praising his captaincy and literally next door I was like, just as I say this, he's made an error. हाँ. ठीक है? We're not saying that he made 0 errors. I'm saying he made the least amount of errors in the a single third. ODI in this entire series in the third ODI. No. Yeah. ये एक बात कर रहा हूँ मैं. Anyway, Coming to enough the- about this. A Yeah. lot of this stuff is also, you know, quite it depends on how you feel about certain things. Yeah. Let's talk about the game, which we can actually talk about objectively. Yeah. यार सारी चीजों से पहले ना आई थिंक हमें आना चाहिए शे होप पे. Shea Hope से भी पहले यार, I just want to talk about the conditions a bit. Sluggish again. नहीं ये जरा ज्यादा interesting थी. I'll tell The you why. outfield was sluggish. The outfield has been sluggish throughout, right? It's been a sticky surface throughout, and second and third ODIs mein, the ball has nipped around the new ball. Yes, so sir. there's a lot of purchase for seamers with the new ball where they can get it to deviate on either side, right? दोनों तरफ वो क्या कहते हैं move कर पाए हैं ball को. They've been able to seam it off the deck. Yeah. What was interesting in this ODI is that after 34 overs, it was actually reversing a Reverse. fair bit. It was reversing a fair bit. अच्छी खासी reverse हुई है. पिछले मैच में भी साइंस आपको नजर आए नजर आए थे थे. रिवर्स स्विंग के. इस दफा थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो थी उन्होंने, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती ज्यादा, है. I think Execution. ज्यादा reverse हुई है इस बार. हुई तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन में भी तो मसले थे मसले ना. थे. वही तो मैं हाँ. कह रहा हूँ, एग्जीक्यूशन में मसले हैं. हाँ. फुल टॉस से कराओगे तो क्या फायदा हाँ. है? ठीक है. Exactly. उसके अलावा one thing that was different in this game was that it was a very windy day in day. Taruba. Yeah. बहुत windy था and बार-बार बिशप यही कह रहा था कि you have to bowl against the wind हाँ. if you are a spinner, ताकि उस एंगल पे उनकी हिट लंबी ना जाए. और वो- which is something that I'm not sure if they exploited or not. मैं वहाँ था नहीं, मैं सही तरह बोल नहीं सकता, मुझे तो नहीं पता हवा किस तरफ चल रही है. But that was something that was, you know, Mentioned by Bishop. Yeah. mentioned by Yeah. Bishop and it is a crucial factor हाँ, as far as wind the तो game is आती है, concerned. obviously. Tiny ass boundaries पे क्या होता है यार, पूरी सीरीज में थी. बार-बार सादों में ये कहते हैं you get value for aerial shots. हाँ. You will get sixes. यार वो याद है 65 मीटर 6 जो इतना दूर गया था. स्टैंड्स के अंदर गया 65 मीटर. हाँ. तो अच्छा सोच लो कितनी होगी बाउंड्री. अच्छा खासा दूर गया 65 मीटर. जब आपको पता है कि बाउंड्री इतनी छोटी है, यार you can go for some aerial hits honestly. Only Abdullah tries Tries, Tries. fails. and fails. और वो दूसरा हसन नवाज, उसको मैं blame नहीं हाँ, करूंगा. हसन नवाज वो के. early days for him and he had 2 really good games. Really good Really games. good. Hassan Nawaz was the only positive coming out of this Yeah. series, man. उसकी कोई गलती नहीं Hussain उसमें. Dalit, But point kind is of that as well. even the West Indies were really reeling. अगर आप देखो phase wise breakdown, you know, पाकिस्तान वाले पे बाद में आता हूँ मैं. The West Indies in the first 10 overs managed only 36 runs and lost a wicket. Yeah. Their next 10 overs post power play are even worse. 33. Yeah, 33 runs for 2 wickets. Yeah. So at the 20 over mark, they are 69 for 3. 36 for 1, 69 for 3. ये पहले 10-10 ओवरों के brackets हैं, ठीक है? And then in the 30 over. yeah, the next bracket, 20 to 30 overs, they manage just 41 runs, which is also low. Yeah. And they don't lose a wicket. They don't lose a wicket. Yeah. But now they have scored 36, 33 and 41 in 10-10 bracket wale phases in 30 overs. 110 for 3 in 20 overs. I'm thinking Pakistan has this game locked down. Same. हम तो बात कर रहे थे यार 185 तक. हाँ. 190. अगर 220 टॉप्स 200 मेरे साथ ये था 230 भी ट्रिकी होगा सरफेस पे, मुझे याद है. Yeah. मैंने साथ को एग्जैक्ट बात की, हम साथ देखते, मैंने कहा सादी 230 might be tricky. It has to be under 230 for Pakistan to chase this down. वो तो ultimately तो खैर in hindsight you could say it, they get to 110 and, for 3 in 30 overs Yeah. and that was enough. But cricket doesn't work that way, right? अगर पाकिस्तान को पता हो 111 चेस कर रहे हैं तो डिफरेंट होता तो फिर वो 42 पे out of those. Okay, that's the point then. From 30 to 40, where the West Indies start to pick things up. Yes. They have a good bracket. They score 65 runs from 30 to 40. Losing bit one low. wicket. They lose 1 wicket. ठीक है, वो Rutherford वाली. Yeah. Sign gets Rutherford. They end up with 175 for 4 in 40 overs. At this point, now I'm home. I'm not with Saad anymore. And I'm thinking, yeah, this has been a very good phase for the West Indies. If they can get to 250, हाँ 250. 250 हो गए, Yeah. they can very well win this game. Yeah. This is what I'm thinking, right?
Mahin, they score 119 runs in the final 10 overs. They end up with 294 for 6, 109 runs for 2 wickets, and they completely take the game away from Pakistan. Khatam. Even if Pakistan had a good batting day, they weren't winning this ODI. You guys remember कि जो हमने प्रीव्यू किया था तो एक ही बात कर रहे थे कि डेथ्स में कौन ओवर कराएगा, हाँ। डेथ्स में कौन ये करेगा. कह रहे थे हम लोग. सीरीज ठीक है. प्रीव्यू में हमने ये कहा था कौन है डेथ कौन है? बॉलर. अब आपको हारिस रऊफ थोड़ा याद आया होगा. मुझे तो वैज जूनियर याद है. Vaz Vaz Junior. Junior. मुझे तो Vaz Vaz Junior would Junior. have- Vaz actually, Junior. he would have been perfect for these conditions with the reverse swinging ball, right? और प्रीव्यू में हम कहते पता नहीं वो फिट है नहीं है, बट he is top, हाँ, fit, he's top fit, end में So वो है. ये आपकी गलतियां आ जाती है ना. Now this death over phase as bad as Naseem and Hassan bowled because they bowled a lot of filth. ठीक है? Filth, Filth. I'm not going to defend them. और spinner भी आपके पिट गए. ठीक है? 119 runs in 10 overs is a lot, especially lot. when you know the surface or the हाँ. conditions aren't really you know. But then again, tiny suitable ass for that. boundaries come in play ना. Tiny ass boundaries do come in play. ठीक बात कर रहे हो. Smart But the ball batting. is reversing. बॉल दे बस फिर बॉलिंग बुरी हुई ना. तो आप आपको- उनको दे रहे हो कि हाँ मारो यार. मारो. आपको अपनी स्क्वाड में हमेशा एक डेथ ओवर्स बॉलर चाहिए होता चाहिए है. होता And you तो missed squad में Haris नहीं, Rauf. team में चाहिए You होता है missed यार. Haris Rauf. You should have had Wasim Junior. Vaz Junior really could have exploited these हाँ. conditions. And ultimately, Or someone who Yeah. can bowl in the Someone. death, bro. ultimately, the West Indies just take this game away from you in those 10 overs. In their last 20 overs, 110 to 294, 184 runs for the loss of 3 Three wickets in their last 20 overs. ये T20 होता ना, ये 184 वाली विकेट थी. ना हार गए थे आप वो भी. ठीक है. या वही तो मैं कह रहा हूँ. हाँ, वो भी हार गए थे. Even if Pakistan had done slightly or maybe even like 50 times better with the bat, they would lose this game. They had to essentially bat out of their skins to win this one because मुश्किल थी ये वाली यार. There was more purchase with the new ball. Second ODI में भी थी. ठीक है. But इस वाले में भी थी. पहले वाले में न्यू बॉल पे कोई इतनी खास परचेस नहीं थी. उतनी कुत्ती किस्म की नहीं थी. यार देख लो ना तुम फिर डिफरेंस इन क्वालिटी जो हम बात कर रहे थे. हमारे ओपनिंग बॉलर्स नसीम एंड हसन वर रियली गुड इन द फर्स्ट पार्ट. Yes. रियली Really. Yeah. जब सील्स आता है ना फिर आपको पता फिर लगता आपको है पता कि चलता है हाँ, that's the difference in उसमें भी quality. आएंगे. I want That's to the really- difference in I quality. want to spend a lot of time on the West Indian performers, but I also want to point out one thing. माना कि Pakistan should have had a death overs bowler in the squad. If not Haris, then Wasim Junior. If not Vaz Junior, then Abbas Abbas Afridi. Afridi. Abbas Afridi. I'd honestly take Abbas Afridi as well. Yeah, हाँ, हाँ. same. कोई आप एक बंदा रखते हो उसका. एक बंदा तो हो ना यार. आपने रोल्स ही नहीं क्लैरिफाई And किए you ना. can go watch the preview. हाँ. This Yeah. is the biggest pain point that we Yeah. kind of point out, right? Pakistan, even if we consider these things, ठीक है, in 2025 has the worst death overs economy in ODIs. Yes, sir. 10.25, I believe. सही है? Regression नहीं है तो क्या है? तो ये एक area of concern है, and I'm pretty sure we've had other podcasts No. जिस पे discuss in किया the था. past in which we've highlighted this very issue as well. मतलब वही है ना. It regression is नहीं है तो not क्या like conditions were starting to suit the West Indies. The ball was reversing. है? Yeah. It's reversing, You could bro. see it. वो- Naseem वो की उस ball में नजर आ- scene- आप लोग कहते हो जो क्रिकेट ट्रेजिक्स है 90s वाले कि ओ यार you took reverse swing away from Pakistan that crippled Pakistan. You had reverse swing over here. Yeah. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहाने कम बनाया करो and adapt. नहीं, Without ये तो- evolving, you will die. Adapt to die. ये तो कौमी मसला है ना हमारा. हाँ. अभी तक Adapt रोते कि हॉकी हॉकी में AstroTurf क्यों आ गई? AstroTurf आ गई, आ गई changes भाई. आ गई, रूल चेंज. आपने evolve नहीं करना. बाकी दुनिया ने इवॉल्व कर लिया. आप हाँ. वहीं पे बैठे हो. सबके लिए आई ना. और यही मसला है ना क्रिकेट में भी. It's run like a professional sport in every other country. Yeah. Even now, Bangladesh ने जो appointments की of Tony Yes. Hemming and different people Everyone. coming in. Absolutely. And you can they've- see the हाँ, game. उन्होंने देखा है कि नहीं यार we need to change. हम बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो. They need to change their pitches. Yes. That's what they decided कि हाँ नहीं अब हम ये करेंगे. करेंगे. Yeah. पाकिस्तान ने क्या किया? बिल्कुल. पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा करता ही है कि कोचिंग स्टाफ चेंज. वो हर 2 मिनट बाद. Oh, it was really funny. You know the West Indies had this emergency. Yeah. What was it? Meeting thing. Emergency strategy Strategy. summit. Yeah. Summit. Summit हो गया था live streamed. Live streamed emergency strategy summit जिसके अंदर Clive Lloyd, Brian Lara, Curtly Ambrose, all of these guys came. So Sir Curtly Ambrose, right? Sir Clive Lloyd. Sir Clive Lloyd. Okay, साथी. और Sir Brian Lara भी बोल ही दो. ठीक है Sir Brian Lara. उसका तो स्टेडियम था. जो कि by the way यार very decent crowds in the last two ODIs. Really happy. वो जरा बाजे बज रहे हैं, वो वुवुज़ेले बज रहे हैं, drums बज रहे हैं. Calypso जरा kings है ना वहाँ पे फिर. Uncles are enjoying themselves. बच्चे are enjoying themselves. You That know. was a fun crowd. Even though it wasn't packed to the rafters, not even close, No. but the crowd was decent in the last Yeah. two ODIs, and you could see people really enjoying अब themselves. देखना अब next match पे देखना और आएंगे. हैं. और जाहिर है उनकी team जीती है. सीरीज जीते और कन्विंसिंगली जीते. Convincing. हाँ. Convincingly. So I really appreciated that. Brian Lara से बात आई क्योंकि ground का नाम ही Brian Lara Cricket Academy है. So these guys
Sir Clive Lloyd, Sir Curtly Ambrose, Sir Brian Lara. Sir Brian Lara ठीक जरूरी है, है, जरूरी ठीक था. है. ठीक है, these guys are called by the West Indian Cricket Board and they have this emergency strategy summit or whatever. जो by the way, I have my views on that as well. इस तरह cricket बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आपकी. So मैच तो जीत गए. मैच जीतना is not the इस goal, summit की man. वजह से नहीं हाँ. जीते. They didn't win because of the summit. आप 57 पे आउट हो रहे हो, 107 पे आउट हो रहे हो, 157 पे आउट हो रहे हो, मसला आपके सेम ही है. Same, सही है. हाँ. Either way, वेस्ट इंडीज ने बड़े बुरे दिन देखे हैं, हाँ. बड़े रिसेंटली देखे हैं, राइट? ये- 27 ऑल आउट देखे हैं. ये Please. इतने अरसे में आई थिंक दिस हैज बीन देयर हाईलाइट. Yeah. हाँ. This literally has been their highlight. So the boys of the Caribbean Cricket Podcast, who are my friends, Mash and Santoki, they said that maybe Pakistan needs an emergency strategy summit over here. And I was like, they have one every 12 minutes. They are overloaded or overloading with emergency strategy summits. यहाँ पे तो हर 2 सेकंड बाद कोई नया बंदा आ जाता है. Yeah. अब आप मैं यही कह रहा हूँ ना, आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे बस. Yeah. फायदा नहीं था. और कुछ नहीं होना. टॉप डाउन, टॉप से भी ऊपर जानी चाहिए. If there is one person who needs to be sacked, we know who it is. I will not name लेकिन him. मैंने वही बोला ना, for that person to get sacked, someone else needs to get sacked, and that That- someone else that's- is unsackable. Yeah. Basically, at- top down sacking हो ही नहीं सकती, इनके टॉप पे ही unsackable है. बेसिकली टॉप से भी ऊपर जाओ ना, तो असल क्रक्स इस बात का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, पेटर्न इन चीफ पीसीबी हटा दो वो, प्राइम मिनिस्टर Prime Minister हटा को दो, हटा दो। और फिर ऑनेस्टली प्रोफेशनल एक जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन चलती है ना, उस उस तरह तरह चलाओगे तो बेहतर हो जाएगी. और ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है ना आपके मुल्क में, ये भी टॉप डाउन ट्रिकल करती है Yeah. हर अदारे में. यहाँ तक कि यार जो सबसे लोएस्ट पोजीशन में बंदा होता है ना किसी भी जॉब में, उसकी सही रेड मारते हैं, वो रगड़ा जाता है बंदा. ठीक है, वो जितना भी काम करे उसकी इज्जत कोई नहीं है. कोई This नहीं. comes back to the गंभीर thing, honestly, the classism classism, thing. yeah. This does come back to the classism thing. हर प्रोफेशन की इज्जत नहीं है इस रीजन के अंदर. इस region में नहीं है. हाँ. Yeah. And this is ultimately it boils down to the authoritarianism and that thought कि I am superior to you. पावर ब्रो. हाँ, मेरे पास Power. पावर है, Power. तुम सुनोगे मेरी, मैं तुम्हें अपनी जूते के नीचे रखूंगा. अच्छा, ये बहुत तब किया, ये बहुत फिर हमें कैसे पानी पता हो होगा? ना यार, तुम लोग देखो, I am not even They not Tapawa on the team, but Tapawa generally. You expect me to be passionate about my job. I right? love it, bro. ठीक है? I love it. मैं But then वो नहीं again, कह I feel like probably the least concerned, not concerned, but I probably am that one person in Pakistan media at least who doesn't actually give too much of a shit about the series loss. बाकियों को ज्यादा है. नहीं, सीरीज लॉस का मसला नहीं है. हारने का तो issue ही नहीं है. 3-0 हार जो कोई It's a demolition, right? 3-0 हार नहीं. It's It's about just addressing what the problems are from yes, not learning. वो तो फिर यार again, बस. people have been asking कि यार why don't you guys create a podcast in which you address all of these issues? We have. मैं वही कह रहा There हूँ. is no point in repeating ourselves. हम जाकर देख लो. हम दोनों ने किए. मैंने बाजिद खान के साथ किया, राशिद लतीफ के साथ हमने किया था, उसके अलावा अहमद नजीब सत्ती के साथ किया था. Yes. जाके सुन लो, सारी लाइब्रेरी पड़ी हुई है. पूरी भरी हुई है. Anyway, वेस्ट इंडीज की तो हमने बात की थी. फेस ब्रेकडाउन. पाकिस्तान की जल्दी से फेस ब्रेकडाउन दे देता हूँ, वहीं पे खत्म हो जाएगी कॉन्वर्सेशन. ऐसे. West Indies were what, 36 for 1 in the first 10 in the power play? Very poor, right? Yeah. Pakistan were like, hold my lassi. 26 for 4 in the power play. पहले 10 ओवरों में 26 for 4. The game's done. You're not winning it. हाँ, ठीक है, it's over. हाँ, right? खत्म उसी वक्त. Then they get to 62 for 5 No. in 20. I was like, recovery. This is their best phase. मैंने इस वक्त मैसेज कर रहा था 5 विकेट विन है बॉयज. जरा करो 62 minus 26 माहौल. किसको कह रही है? हाँ, गलत बंदे को कह रही है यार. 36. 36. Pakistan managed 36 for 1 from 10 to 20. That's their best phase, dude, because they're bowled out for 92 and 29.2 overs. They're bowled out within 30 overs. Just by the way, इसके दौरान यही मैसेज हो रहे थे. 4 विकेट विन है बॉयज, 3 विकेट विन है बॉयज, 2 विकेट विन है So बॉयज. in the last 9.2 overs from 20 to 29.2, Pakistan scored 30 runs and they're bowled out. They lose all 5 wickets. क्या ही बात करनी है इसकी? The game is done in the first power play. The game is done in the last 10 overs of the previous innings. Yeah. Truth be told. Yeah. It was done. You lose the momentum. You also concede far too many runs. हम यहाँ कह रहे हैं यार 250 पे वेस्ट इंडीज जीत जाएगी. 294 in these conditions बहुत मुश्किल हो जाना. और उसके बाद यार बात ये नहीं है 92 पे ढेर हो गए यार. आपने कुछ अप्लाई नहीं किया. No application, zero execution. Bowling shit, batting shittier. A lack of spirit as well. Everything. Like I said, आपको पता है टाइनी बाउंड्रीज है. You know this game is gone. नवाज की मुझे ये चीज पसंद आई थी. At least I'll have a crack at it, right? Yeah. करो, कुछ तो कर लो. क्या ही ये इतनी बॉलें कंज्यूम कर आपने क्या पट लेना है? और गालियां ही खानी है अपने अवाम से, honestly, जो कि you know. I always advocate against swearing against players, but टीवी के सामने तो फैंस की अब गालियां निकलेंगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. प्लेयर्स को पर्सनली टारगेट किए बगैर आप निकालो तो जस्टिफाइड है. हाँ, आप सोशल मीडिया पे जो लोग निकालते हैं, मैं अभी भी उनके खिलाफ ही हूँ.
But yeah, नहीं, you can say fuck this team, bro. हाँ, कह सकते हो. but आप अपनी safe spaces में तो फिर आप बोलोगे चीज़. हाँ. और this सब sort of बोलते performance warrants it. हाँ. Yeah. Truth be told, Yeah. right? Anyway, coming to the performers from the West Indies. Rally around the West Indies, baby. I want to talk about Shea Hope first. Skipper Shea Hope, यार हम unbeaten. कह रहे थे कि 50 रन मारेगा, हम कहते थे Shea मैंने Hope कहा था, मारेगा. I called it. I was like, Shea Hope का score आ रहा है आज, ठीक है? And this man finishes unbeaten on 120 of 94 deliveries. This is the guy who had a strike rate issue. He has stepped up so Yeah. मैंने पहले भी कहा था कि इसने step up किए. He's just played a really bad game No. पीछे, Yeah. ठीक है? But over here, Shea Hope gets to his 50 and 54 deliveries. Yes. He was brisk. बाकी struggle कर रहे थे जहाँ हाँ, पे. और वहां पे पता है, he was very pragmatic. He was rotating strike. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. केसी कार्टी और शेफेन रदरफोर्ड की इतनी गंदी innings थी. बहुत बहुत बहुत. गंदी. लेकिन he was the one. Yes. ये होता है ना. Momentum build कर. जब प्लेयर होता है ना, मैं वही बार उस पे आ रहा हूँ कि आप किसी भी रट में आपको मसला हो कि यार स्ट्राइक रेट का इशू है, जब वो प्लेयर होता है वो उसे रिजॉल्व करता है. और आप रोटेट करते हो स्ट्राइक. That's what he was doing. Shea right? Hope consistently वो strike rotate करता उसने है. कहा, I'll get my iron. हाँ. I'll just rotate strike over here. I'll do that for the most part. I'm And not then- going to lose my wicket. Yeah. Yeah, if the West Indies do manage 110 runs somehow in the first Oh, 30 Shea overs, Hope. that's all Shea Hope. Yeah. और कोई है ही नहीं. Evan Yeah. Lewis a bit at the start, I suppose. That's he pretty was much it. too slow as Evan well. Lewis also just takes down Tallat, right? हाँ. और तो उसने कुछ खास हाँ. किया नहीं, right? 2 छक्के उसे मारे थे तलत हाँ. को, उसके अलावा तो कुछ he भी was नहीं. too slow. But here's the fun part. Shea Hope gets to his 1554 balls, right? Yes. Look at the acceleration beyond that. He gets Yes, to his sir. 183 deliveries. So his second 50 comes in 29 balls. Yes. And he ends up adding 70 runs of 40 deliveries because he's ended up with 120 not out of 94 balls. 94. सोचो यार, 70 of 40 when he need to accelerate. और 29 balls भी कर ली. बॉय की 18 सेंचुरियां होगी. Yeah, he is the third most prolific 100 scorer in ODI history for the West Indies. Yes. One of my favorites. Yeah, 19 ODI hundreds हैं Brian Lara के, right? Or is this guy? कौन this guy? उसके भी 19 ही वैसे. I know Brian Lara is at 19. I don't know what Chris Gayle is at, but Chris Gayle has a record. I Yeah. think 25 था शायद, if I'm not wrong. Something like that. हाँ. I can't quite remember. But Chris Gayle is number 1. Brian Lara is number 2 with 19. And now Shea Hope is at number 3 with 18. And, you know, I just like to see players work on themselves and evolve. And he's worked on Shea himself. Hope ने अभी नहीं किया ये बात. काफी देर He से has some poor games here and there जहाँ पे strike rate का मसला आता है, मगर for the most part, for like a couple of years now, he's really fixed that strike rate. Growth na. Yeah. You learn every day, make new mistakes, come back. And you know, he's the captain. He knows that West Indies really need to win this series. Yeah. He, you know, is being dogged at the start. No. मगर 54 ball 50 भी अच्छी है हाँ. conditions में, जहाँ पे किसी से run ही नहीं हो रहे. हाँ. 54 ball 50 is exceptional. That's really good. Then you score your next 15 29 runs. Overall you score 29 balls. हाँ. ये मैंने फिर से फिर से कर दिया. एक दिन पहले भी किया मैंने. You score your next 15 29 balls. You end up with 70 in 40 balls post 50. 120 of 94 is absolutely exceptional. अगर मैं नंबर दे रहा होता मैं 10 देता. 10 से ऊपर है. 10 by 10. इस स्टॉक पे 10 से ऊपर 10 है, से honestly. ऊपर ही बनता because जहाँ पे किसी और ने, I know जस्टिन रीज ने एंड पे आके मारे, लेकिन किसी और ने वो इम्पैक्ट नहीं दिया. he sets it up. रॉस्टन चेज ने भी नहीं रॉस्टन Roston चेस Chase और was ग्रीव्स fine. रॉस्टन चेस और ग्रीव्स ने किया, मगर those guys get slightly easier situations Yeah. than Shea Hope has to Yeah. play throughout the innings, Hope right? has to play throughout the innings. When Hope is Momentum out build there, करना है. things are really dire for the West हाँ, Indies. ठीक लेकिन है? होप थी. हाँ, लेकिन Yeah. hope थी. And look, if I break his shots down, it was also exceptional stuff, right? He swept 1 for 4, then he slog swept 1 for 6, and Yeah. then he slog sweeps another 1 for 6 with one hand. Yeah. एक हाथ से slog sweep पे छक्का मारा है बॉय ने, one-handed slog sweep for 6. Then Sadi, he basically spams the rock back and pull. बहुत हाँ, मारी है इसने. yeah. There's 1-4 and That mid wicket हाँ, वाला वही. region ना, हाँ. rock back and pull वैसी बड़ी Deep शीरों की mid-wicket, खूबसूरत है. yeah. That's his pet shot. Really good at that. He spams it 1, 4 and 3 6s off that shot, right? There are edges, ऐसी बात नहीं है. There are 3 edges that go down for 4. ऐसी like he does get हाँ. lucky at times, but then again वो दूर ही थी दूर, सलमान अली आगा से. बहुत हाँ, दूर. बहुत अच्छी खासी दूर थी. वो हाँ. missed chances नहीं. Chances नहीं थे, हाँ. Yeah, आप वो नहीं कह सकते. वो fortune favors the brave कह लो. Yeah. And then versus pace, he doesn't score runs off pace for the longest time because pace isn't bold, right? आती है जब pace, he creams a couple of balls through that cover region, which again is a strong point. He slaps Naseem Shah over his head for 4. And then he also squeezes a 4 to the fine leg fence. Ends the game. आखिरी ball है. Full toss मार दिया है. He flays it to the point fence and finishes strong on 120 of 94. In style. What? Player of the match इसी का बनता. हाँ, हाँ, 100%. Because he's the one who yeah. takes the game away Yeah. from Pakistan, and he's the one who not only gives West Indies hope,
he pretty much gives them the series Yeah. at that point. दूसरा जो in contention though, that was Oh, Jaden beautiful. Man, Seals, Jaden. man. Beautiful. Can we call Jaden Seals generational at this point? नहीं. Why not? Why would you He's want to not put a as label quick, but he's still high 130s. ठीक है. थोड़ा सा time दो. His test record is exceptional. His Average- test record is exceptional. अच्छी खासी उसने विकेटें भी ले ली हुई हैं. Close to 100 wickets. I think 85 या इस तरह कुछ होगा वो. I can't remember. T20s नहीं खेलता यार. That's T20s such नहीं an हाँ, वैसे क्यों odd नहीं खेलता? thing. It's a good thing. I like it. Such an odd thing. I love it. मुझे स्पेशलिस्ट प्लेयर्स पसंद आते हैं और जेडन सील्स वाकई T20s में शायद उस तरह सक्सेसफुल पता नहीं शायद हो भी शायद who's to say अभी he's still young but I know that I don't even want to see him in T20s. मत खेलो भाई. I know that he takes his wickets in test cricket at about 22 apiece. Yes, sir. Something like that. Strike rate देखो सादी strike rate is the मैं best for खोलूं. any bowler I think or second best for any bowler with a minimum of like 50 wickets or something ऐसा कोई रिकॉर्ड उसका वहां पे भी है. मुझे एवरेज स्ट्राइक रेट उसकी ढूंढ कर बताओ. टेस्ट में Yes. टेस्ट में उसकी 88 विकेट्स हैं, 22.32 एवरेज है, स्ट्राइक रेट इज 39.3. If you want to talk about ODIs, he's got 31 wickets, 33 की एवरेज है जो कि 40 above थी Yeah. सीरीज से इस series से पहले, पहले 40 above थी. and a 33.8 का स्ट्राइक रेट, So टेस्ट का स्ट्राइक रेट क्या था? 39.3. That is also अब थोड़ा बढ़ गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा मार लिया Yeah. क्योंकि he did hold some sort of record. But Yeah. 22 की average and 39 का strike rate is an exceptional combo. And then in ODIs, like Saad was saying, he was averaging over 40 before the series. Yeah. And now he's averaging what? 33. 33. एक चीज कर देते हो मेरे लिए. Can you open his ODI yearly breakdown and tell Yearly me what he's breakdown, averaging in 2025? अभी Because I खोल feel like those numbers would be flat out insane. 2025 में 7 innings हैं और इसके 18 विकेट्स हैं, 17.5. There you go. Yes, strike rate of 18.2. His bowling average in 2025 in ODIs is 17.5. Yeah. And his strike rate is 18.2. 18.2. That is unreal. And a lot of it comes in this innings as well, where he is basically just all over Pakistan. Yeah. He demolishes Pakistan's batters. पूरी batting lineup ही. ओह, खा गया. खा गया. अच्छा सबसे पहले तो I think he gets Siam all 3 times in this series. Yeah, all 3 ठीक है? times. yeah. And he does the same thing. Yeah. If you look at his हाँ, dismissals, sa- right? same thing. He is saying, Siam, I'll give you width. मारो. Slash the width, I'll get you out, spot out. He does the same thing. He removes Siam with his third delivery. Yes, sir. And it's the same plan. So Siam Ayub के लिए भी थोड़े notes हैं यहाँ पे. Siam you. Siam Ayub के लिए notes over here that you can't become that predictable as No. well. Yeah. ठीक है? And और- Jaden Seals has very simple plans for him that he keeps No. executing and he keeps getting him out. वही ना, same mistake, same Same mistake, same mistakes, mistake, उससे कुछ मुझे तो issue सीख और लो. और कुछ Yeah, नहीं. यहाँ पे एक मसला हो गया था. But anyway, he removes Siam Ayub with his third delivery. Comes back to bowl his second over and gets Abdullah Shafiq and Rizwan off successive balls. On a hat trick. He's on a hat trick. Abdullah was trying to pump him up over mid-on. He's caught by Moti, I think, at mid-on. And then Rizwan shoulders arms. So chhod hi di na usne ball. Jags back in prodigiously. And he cleans him up, Jaden Seals. Even at this point, he's killed Pakistan. Yahin pe. हाँ, 8 for 3 पे ही मुक गया. खत्म. सही है? But then he comes back. You're right. Jaden Seals gets more wickets. He pins Babar Azam LBW in his 5th over. And at this point, you're thinking they worked him out. He got Babar twice in the series, no? I think so. पिछली में भी. Yeah. Pretty sure you're right. Anyway, gets Babar Azam in his 5th over, and that was it for him in the power play. 4 for 12 in 5 power play overs. That was what Jaden Seals was able to accomplish. Comes back to bowl 2.2 overs later, gets 2 for 6. Gets Naseem and Hassan's wicket as well. Credit to Hope over here to bring him back. कि आओ खत्म करो खत्म यार. करो यार. वाकई मैं भी शुक्र कर रहा था कि वो तूने ठीक किया. I need an early night. I मैं have a really मजाक tough. भी नहीं कर रहा था, मैं भी बहुत ज्यादा I had a really tough day tomorrow, and I was like, this game is done. I want it to be done right now. Yeah. Jaden Seals ends with 6 for 18 in 7.2 overs. This was his maiden 5-wicket haul in ODI cricket, career best Best. figures. Yeah. And why I say he might be generational over here. एक तो look at the way he stepped up in ODIs in this year. It's ज़्यादा time दो. There is a conversation over here. I is what mean I'm trying to say. talent तो है. मैं talent तो है वो. 88 wickets is 12 wickets less than Mohammad Abbas. Bro, time दो थोड़ा. Okay, हर एक को इस तरह. I know talent है, वो जाएगा तो he could become one of the best. I think he's very unsung in terms of upcoming youngsters. मैं वही कह I'll रहा हूँ take ना. unsung people over the देखो overhyped मेरी बात people. सुनो. Trust हम me. everyone, this is for everyone across the world. World. हम generational बोलते थे, if they don't live up to the hype, हाँ यार. वो उनके वो लिए तो कुछ भी हो मसला. सकता है. वो तो कुछ भी हो सकता है आगे. so why do you want to term him as I'll tell you why I generational want to term talent? him. I know that he's not the quickest, but he's quick enough. High 130s Yeah. करा लेता है.
what Jayden Seals is able to do is that he gets the ball to seam off the deck in either direction, and it is really tough for batters to pick him. Yeah. वो नहीं पकड़ पाते. He can nip it back in, he can jag it back out. And his line and Yes. lengths Length. are perfect. Impeccable. चैनल में He- बॉल करवाता रहता He can है. bowl bumpers as well. हाँ. ऐसी बात नहीं. Yeah. मैंने देखा उसको bouncer He's मारते a पर वाकई smart bowler. Yeah. he targets the channel and he got full value for his bowling in this game. 6 for 18. He ends up with how many wickets in this series? तो 10 तो होंगी यार. Highest of all time? 3 for 23. 6 तो इधर ही ले हाँ, गया. 6 for 18 and 7.2 overs in the third ODI. I'm pretty sure he took 3 for 23 in the The second. last, yeah. The second one, 7 overs में. पहले वाले में मुझे इसके figures नहीं याद. But I would like to think that ये जो 7 matches in 2025 में इसकी 18 wickets है ना, वो 10-12 तो इधर ही हैं. 10-11 तो इधर ही हैं. इतना कुछ होगा. I can't remember his figures in the first game. Right? But चलो, either way, खैर. 9 wickets in 2 games. I think that this guy will really achieve something in his career. He could become current cricket में तो one of the best for Good sure. news for And- West and Indies cricket. What do the rest of the West Indian bowlers do? I know Romario bowls. तुम्हारे पास खुला होगा Yeah, ना? Romario bowls 5 power play No. overs and concedes 10 runs. तो न्यू बॉल से परचेस तो थी, मगर ये देखो रोमारियो भी नहीं पिट रहा, उसका फेज ही नहीं है. रोमारियो इज नॉट अ न्यू बॉल बॉलर. रोमारियो पिट रहा नहीं है या हमारे बॉयज खेल नहीं सकते खेल ये नहीं पा बात रहे. ठीक है, मगर 10 रन 5 पावर प्ले ओवर्स में. Yeah. ridiculous Yeah, मतलब- for रोमारियो ना. मैं ये तो कह रहा हूँ this is Romario Shepherd we're talking about. This is not Yeah. Jayden Seals now. यार वो 5 ओवर में 20 भी दे देना तो मैं कहूँ यार that's a really good performance. Yeah, anyway. 10 रन. Roshan Chase, 6 overs, 16 runs, 1 wicket. Again, very good. Yeah. 16? Yeah, 16 runs. He only gives 16 runs in 6 overs Yeah. and takes a wicket. Yeah. Okay. 2.67 की economy. Wow. Then Moti, 7 overs, 37 runs, 2 wickets. So he goes for the most runs, I suppose, but he Yeah. also picks 2 wickets, right? So Yeah. 2 for 37, you take it. Yeah. And then Voldemort got, he conceded 7 runs in 4 overs. Voldemort ने भी सिर्फ 7 रन ही खाए हैं 4 खाए तो किसी ने भी नहीं है. हाँ, यही था वो बस. 92 में किसने खाने हैं? किसने खाने वाकई हैं? 92 में किसने खाने हैं? Just by the way, All over great bowling performance, but obviously Jayden Seals is just he's different gravy. Yeah. मुझे बताओ रोस्टन चेज को पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या होता है? Roston Chase So good. turns up versus Pakistan and the West Indies. West Indies sorry, का है वो. Pakistan and England. मैं बताऊं अब Yeah. उसका ODI बैटिंग एवरेज ओवरऑल इज 27.97. Yeah. पाकिस्तान के अगेंस्ट 69. वो एक प्लेयर होता है ना हमेशा, जैसे बिशु था. So बॉलिंग एवरेज Yeah. अच्छा. 46 ओवरऑल इन ODIs. पाकिस्तान के अगेंस्ट 25. That's incredible. You know, Mitch Marsh is similar in Test cricket. He only smashes Pakistan and England. England. Roston Chase loves playing Pakistan. ये अगर आप back to the Test match जाओ वाला, why did he do that? Yeah. He's the one who gets that 100 and वो Shannon Gabriel ने इसके साथ ज्यादती की थी. हाँ, वो तो हमें याद रहता है ना, और भी बहुत इंस्टेंसेस है कि चेस नहीं हमसे. Yeah, कभी कभार chase कर जाता है, like the previous game. हाँ. Even in this match, यार, I know that he scores 36 of 29, and there's some better, like Greaves has better numbers, but Chase has a trickier phase than Yeah. Justin Greaves, right? And he comes out and he gives West Indies that much needed impetus. Yeah. Before Hope goes berserk, it's the chase knock Yeah. that kind of, you know, gets things moving for the West Indies. He plays spin really well. He swept and he reverse swept up front. There were 2 beautiful straight sixes. ओए होए होए. One off pace, I think Hassan Ali tha, hold the pose wala, and then he smashed a straight 6 off spin as well. And yeah, there was an aerial flick for 4, bahut khoobsurat. And yeah, overall, you know, that 36 of 29 is worth a lot more because he gets that West Indian innings moving or going. He's the one who kickstarts things. Uske baad hope bhi nahi. He doesn't look back either. Yeah. So I think Roston Chase has a really good series. really Yeah, really good really series. good और पाकिस्तान के अगेंस्ट था तो करना तो था ही. Player of the series मेरे लिए Seals ही था. उसी का बनता था. यार, he was- Yeah. जो कर दिया उसने. He deserved that award for sure. And in terms of other performers, I think we have to talk a bit about Justin Greaves. Justin Greaves was good. Justin Greaves ends up unbeaten on 43 of 24. Like that's a lot of runs, man. I know they bowl filth to him, but and there are a couple of edges. It's not a perfect knock, but he has some, or he displayed some big hits in the V. Very, very big hits. And also he's a really good puller of the ball. Pull की उसने fine leg पे भी निकाली. I think that was also a very, very high impact knock. हाँ, obviously यार, जो उसने जो किया है was high impact. Truth be told, if you asked me before the series, I would have said, what is Justin Greaves even doing in the ODI? I think you did say that. I probably did say that. Yeah, we किसी did एक say match. that. Yeah. हम जब रोमारियो को इसने replace किया था, हम पढ़ गए थे कि क्यों है. Well, उसने prove कर दिया. Even in this match, when he is batting ahead of Romario, I'm like, didn't Romario make more sense over here? मैं दिमाग में सोच रहा हूँ. And then Justin Greaves is like, no, Behram. You shut up. Sammy knows his shit. Yeah, well, Darren Sammy. Yeah. Yeah, उसने करके कुछ दिखाया ना आकर. Yeah.
साइंस तो है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के हाँ. लिए। साइंस और यार ये जो परफॉर्मेंसेस इस मैच में दी हैं सारों की हमने बता दी और ओवरऑल इन द सीरीज एज वेल आई फील लाइक देयर इज स्टिल सम होप हाँ. For over West there. Indies. और अभी देखो ना प्लेयर्स हैं कुछ यस uh, वो बेचारों के यार चले जाते हैं पूरा रिटायर्स Alzai didn't play. यार ये देखिए भी तो देखो पाकिस्तान नॉट इवन लूज टू अ फुल स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज Yeah. पूरन हैज रिटायर्ड अल्जारी वाज रेस्टेड Did. Hetmeyer, Robin Powell. Hetmeyer and Robin Powell are injured. Yeah. तो ये तो फुल कोई स्ट्रेंथ ही नहीं हाँ, उनकी. नहीं थी. और पिक होगा कोई नहीं कोई और भी तो इंजर्ड हुआ था एक दिन पहले ही बिल्कुल. नहीं वो आ गया नहीं, वो आ गए थे ना, Evan Lewis और Brandon King. Brandon King से ब्रैंडन तो किंग है कुछ हुआ ही नहीं हॉरिबल है. सीरीज फॉर हिम Yeah, उसके terrible, बावजूद terrible देख लो ना कि क्या किया उन्होंने In हमारा हाल fact, Jule Andrew didn't get a game. He probably would have fared better than Brandon King. वैसे सही बात है जूल हाँ, एंड्रू को एक दे गेम मिल देते. जानी चाहिए थी आई मिस हिम ऑलरेडी व्हाट अ प्लेयर अच्छा, Anyway, so हाँ. we've discussed the West Indian performers. We've discussed pretty much everything, generalized topics भी कर लिए. पाकिस्तान पे आ जाओ एक और चीज फील्डिंग अगर मैं देखूं दोनों टीम्स की पाकिस्तान डिड कैच ऑल देयर कैचेस एक मो हारिस वाला तो एक्सेप्शनल कैच वो बहुत अच्छा था. सब फील्डर आया था वो दैट with his bucket hat हाँ, with his that bucket was hat. That catch in the deep was exceptional, great composure, didn't even move No. और वो कर गया वो कैच बड़ा मुश्किल कैच था didn't move an inch Yeah, वो Evan Lewis की wicket थी, it was a pretty crucial one. Yeah. So Pakistan got all their catches. There's the Mo Haris catch, and if I look at the outfielding, they were scrappy at times. थे, थोड़े से scrappy moments थे. Whereas if you look at the West Indies, there's a solitary misfield in there, which is why Babar Azam gets a 4. That's just that one error, and So bad. Baki they were flawless So apart rude. from that. Do it my again. God. And you know what? It's been some good stuff in the field in this ODI series after that first game for the West Indies Yeah. when they dropped 2 catches, एक मोती और एक hope. उसके बाद से the fielding was very Yeah. good. You have to give them their flowers over there as well. अच्छा जानीस का बता दो जल्दी से लोगों को. अभी मग जाने लगा था मग जाने लगा था मग भाई. जाने लगा था आप लोग जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाते हैं जो बन जाते हैं बन सकते हैं जो कि डिस्कॉर्ड में स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे आप बहराम से बाहिराम Bahram. माहिन से और मेरे से बातें कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली exclusive sieve. उसके बनने के 2-3 तरीके हैं सबसे पहले पेट्रियन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से बन जाए इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर 1500 पर मंथ पे मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी उसके अलावा डिस्कॉर्ड अगर आप लोगों ने वैसे ज्वाइन करना है इट्स फ्री फॉर ऑल टू ज्वाइन सर्वर ज्वाइन करो वहां पे काफी ज्यादा फन गेम्स हो रही हैं फैंटेसी प्रीमियर लीग भी शुरू होने लगी है so और भी come फैंटेसी and- कराते हैं यार हम हर हाँ. सीरीज की अपनी कोई फैंटेसी होती है हर मैच की अपनी फैंटेसी होती है हमने अपनी गेम बनाई हाँ, है. so come and join us there. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी उसके अलावा क्या क्या tariqe hain Behram? Yeah, so if you still live under a rock in 2025 and don't have online banking, don't worry, we've got you covered. Covers. Take off the covers. Saad Mahin and I, we live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So our मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. Per 1500 payment, we will make you Jani the podcast for 1 month, or we will make you Jani the podcast for 6 months if you gift us an authentic sports jersey. कोई भी team हो, कोई भी sport हो, domestic, international, doesn't matter. The only thing that matters is that it must be authentic and not a knockoff. Baki, as I always say, Saad Mahin and I, we are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. बहुत हो गई मसालेदार खबरें और सनसनीखेजियां. Enough with this sensationalism. We are encouraging and promoting intelligent sports/cricket discourse. It's an inclusive community. Come become a part of our 1, 2, 3 family. Yes sir. Yes, sir. अच्छा जी. इससे याद है मैथ्यू फोर्ड भी तो नहीं था इस सीरीज में. Matthew Ford. उसको क्या ही करना है? Alzari is a big one. Matthew Ford is not. Matthew Ford Matthew को Ford is क्या a ही step up from Jedediah Blades, I suppose. Yeah. Yeah. वो I थी think बड़ी- this was their best team जो available थी Bhai, उनके पास it is players. actually a pretty good pace attack if you look at Voldemort, Seals, and Alzari. हाँ अल्जारी Voldemort हम नहीं चाहते खेले मगर he is still quality. वो अलग बात है कि हमें खेल पसंद रहे नहीं तो, रहा. हाँ. We dislike him for other reasons. Yeah. अच्छा प्ले रेटिंग्स नहीं करे आज Player हम, ratings नहीं होंगी. क्योंकि हम अब Collective. पहले बता दें कलेक्टिव बिग फैट जीरो Yeah, I mean, when you lose by 202 runs, it has to be a collective big fat Yeah. zero. You don't deserve ratings. Yeah. Okay? And it is like pretty much like a spanking for the ages, right? हाँ. इस पे हम बात हर किसी की कर लेंगे. लेकिन मगर हम- रेटिंग हर एक की जीरो रेटिंग सबकी जीरो है भाई. हाँ. कुछ नहीं कर सकते. Even the guys who बेचारे don't deserve zero आज उसको जीरो भी आज जीरो उनको भी जीरो ही मिल रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीरो 09078601 बल्कि 0900 हुआ पता यार कसम से they were making jokes about postal codes and stuff like that. ठीक है 3 तो डक सर्व करती थी ऊपर ही. हाँ जी Saim Ayoub, Abdullah Mohammad Rizwan, Shafiq. and Abdullah Shafiq. Those are 3 ducks up top. Enough ducks to feed people in Taruba, या right? हाँ
Yeah. Yeah, ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे वहाँ पे. South of Trinidad. So yeah, where do you want to start with? Sign. Sayam Ayub. Sayam Ayub scores a bronze duck with the bat. Like Saad and I mentioned earlier, it's the same dismissal. Same dismissal, not learning from your mistakes. I think. If I'm a bowler in international cricket, I'm telling myself and I'm telling my captain, yeah, trust me. Give me a packed offside field. I'm going to continue to pepper him over there in that region, and he will ultimately get caught out. My issue was, चलो ठीक है, you're going for an expansive drive. आपको लग रहा है कि आपकी रेंज में आ गई, लेकिन आपको पता है कि कितनी मुश्किल थी पिच. उनकी आखिरी 10 ओवर निकाल के आप अगर देखो तो कितनी मुश्किल थी. आपके बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है विद द न्यू बॉल. बिल्कुल. Jaden Seals has been doing well. आपको 2 दफा आउट कर चुका है. What are you doing? वही प्लान है उसका. पैक्ड ऑफसाइड फील्ड ही है. उसकी प्लानिंग, उनकी प्लानिंग वाज परफेक्ट. आपकी प्लानिंग क्या थी? कहां तो सोचे. So yeah, bronze duck with the bat पे बंदा क्या ही और बोल सकता है, but it's the mode of dismissals that have really kind of stuck out for Sayam Ayub in this series, at least in order. But he was good with the ball though. He was good with the ball. You can't really give him fault him much. He bowls 8 overs on the bounce. In the middle overs, right? And he gets 1 for 36 in those 8 overs. So yeah, so Rutherford को आउट किया उस स्टेज पे बड़ा जरूरी था. उस टाइम पे अच्छा डिसमिसल था वो Rutherford वाला. With the ball he was better than average. With the bat in this entire series he was below average. He was way below. And I'm not saying कि Sayam को निकाल दो. But Sayam needs to learn कि यार इस तरह की surface है, पता है if you get stuck in there is value for shots later on. And once you've got your eye in, फिर आप बेशक चांस ले लो, मगर शुरू में यार मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉल छोड़ो, मगर एक ही तरीके से अगर आप बार-बार आउट हो रहे हो, you need to be a wee bit more cautious about that. That's all I'm saying. You can tap and run. Yeah, true. You are good enough for that. अच्छा जी. Abdullah Shafiq. He's got what 4 ducks in the last 10 innings. Last 10 innings में उसका रिकॉर्ड है. 150 उसके अंदर, just by the way 17 odd की एवरेज है, 63 odd का स्ट्राइक रेट है. That's last 10 innings in international ODI. His 50s against Zimbabwe as well in 2024. 50s against Zimbabwe. और वो भी 70 के स्ट्राइक रेट से ही थी. हाँ, स्ट्राइक रेट तो बुरा, अगर ओवरऑल 63 स्ट्राइक रेट तो क्या ही होना. And an 8 ball duck doesn't help. और उस 10 innings में 4 ducks. Yeah. And you could tell that he's gotten frustrated. He's scored no run for 7 deliveries and now he's just using his feet and going up top. एक मैं बस ये चीज बोलूंगा कि he might be one of the few players who was like चलो मैं छोटी बाउंड्रियों का कोई फायदा उठा. Doesn't matter bro, वो छोटी बाउंड्रियों का फायदा उठाने के लिए नहीं, मेरे लिहाज से नहीं जा रहा था. वो अपना रन करने के लिए जा रहा था कि यार 7 बॉलें होंगी, I haven't got off the mark. And you know what? It all comes down to strike rotation. Even on a slow surface, you can tap and run. You can tap and run. You can नहीं आ रहा ना run. करो. Yeah, didn't the West Indies do this? They were looking for quick singles all the time. Shai Hope did this. बार quick singles. Shai Hope. अब टेक्निक की बात करो, अब्दुल्ला शफीक इज अ वेरी फाइन प्लेयर. एक टाइम पे तो रन आउट भी होने वाला था, याद है? हाँ, बाबर आजम इज अ वेरी फाइन प्लेयर. अगर आप उस तरह देख रहे हो, सायम अयूब, इनको गैप्स नहीं निकालने आते कि यार हम इधर टैप करके सिंगल ले. गैप्स तो दूर की बात है, मैं तो गैप से बहुत पीछे आ गया हूँ. मैं तो लिटरली टैप एंड रन पे आ गया. टैप एंड रन पे थोड़ी फील्ड भी तो ऊपर होती है ना. आपने थोड़ा सा इस तरह देखना होता है कि एंगल्स बनाने होते हैं आपने यार. What did Javed Miandar do, bro? What did Sarfaraz Ahmed do? That's what they did. They were cunning people. And they would even Shoaib Malik वो भी यही करता है यार. So strike rotation है नहीं. Both of those guys. Sayam goes away to the same type of ball, same mode of dismissal. And Abdullah Shafiq is frustrated. He goes for a big shot. He's out for an 8 ball duck, which is मैं कहता होता ना golden duck. Oh, शुरू करते हैं diamond duck से. 0 of 0 is diamond duck. First ball duck is golden duck. 2 ball duck silver duck. Then 3 ball duck को मैं bronze duck कहता हूँ, जो साइम ने किया. 4 ball duck का मैंने नाम बनाया. अच्छा. Copper duck. 5 ball का क्या है? वहां पे नहीं है भाई मेरे पास. 8 ball duck का तो पता नहीं क्या बनेगा यार. क्या टिश्यू पेपर duck. प्लास्टिक भी अच्छा मटेरियल है. सस्ते वाला प्लास्टिक. हाँ, वो जो गंदे से टॉयज नहीं मिलते रेडियो पे जो बिक रहे होते हैं, वो वाला डक. 8 ball duck really poor, and Abdullah had an opportunity to prove his mettle in the series. And he hasn't. Not at all. Not even close. And he has looked pretty at times. और pretty होने के ऊपर आप टीम में नहीं आ सकते. आपका scoring rate बहुत pathetic है. Like Saad said, averaging 17 odd with a strike rate of 63 odd in your last 10 innings, which have 4 ducks. I'm sorry,
That's not good enough. That's not going to cut it. लेकिन मसला ये गिव अस नेम्स कमेंट्स में लिखो कि who are the potential replacements for them. अब्दुल्ला की मिल जाएंगी ऐसी बात हैं. फखर अगर वापस आता है कभी इंजरी से तो he is one. इमाम उल हक has scored 2 tons in England. By the way, Imam ul Haq Yorkshire के लिए just scored a ton while chasing down 295 yesterday. Back-to-back tons, right? I'm not saying Imam is the answer by the way. Back है या नहीं लेकिन Back-to-back है ना? 50 के बाद back-to-back tons हैं. Again, Royal One Day Cup में competition का level थोड़ा low है because everyone's playing the 100. Everyone is. So there's that, and I'm not saying Imam ul Haq को वापस लाना चाहिए. I'm talking about contenders. मैं नहीं चाहता. Contenders for spots में वो भी आता है, and then if you eventually want to try Haseed, he's there, I suppose. और भी होंगे. I'm not getting into that in this होगा ही ना. in that But Abdullah hasn't done anything to kind of stake his claim. मैं इस पॉडकास्ट में हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे कौन कौन आ सकता है उसकी जगह, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोले कमेंट्स में. या आप कमेंट्स में बता देना. अच्छा जी, बाबा अज़ाम सादी, तूने शर्ट पे पहना हुआ ना 47. That was his score in his first innings. Then he bags a duck and then he gets 9 of 23. You know what 47 plus 9 is? What? 56. Ooh. Yes, sir. Damn. Babar Azam lives up to his number. Yeah. 56 runs in the series, 9 of 23 in this particular knock. Again? This shouldn't even have been 9. 5 होने चाहिए. It should have been 5 because the one boundary he scores is an on drive which should have been fielded. No. That's the one misfield. ठीक है? That shouldn't have been a boundary. Yeah. He should have been 5 of 23. That's how bad a game he had. और मैं बाबर पे ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा. We've mentioned before that either he is done or he comes back from this and proves his greatness. ठीक है? मैं काफी अरसे से बोल रहा हूँ, वैसे पता नहीं कितने 6-7 महीने तो हो गए, मुझे शक है. I think he's done. He could be. The very well could be. The possibility of Babar Azam being done is much higher. Is more and more likelier by every or with every passing day. Is much higher than him making a comeback joke. I don't think. I love the Marnus comparison because both of these guys experience 4 to 5 year crazy peaks in the wobble seam era, in the pace playing pandemic, ठीक है, which is incredible. It's like they're not even impacted by it. उसके बाद the drop off is so significant that they can't even buy a run. It's been 2 years. It's been 70 something innings, 71 I think innings in international cricket. 71 or 72 innings in international cricket since Babar Azam has scored a ton. And all I'll say over here is that I feel that bowlers have worked him out. I feel like they know how to dismiss him. And he hasn't worked on himself as well. Yeah. अब देखो वही वाली बात आ जाती है. Either the bowlers have, which they've definitely worked him out. I mean सबसे ज्यादा attention भी वो बाबर पे ही पे करते होंगे. Obviously. करते होंगे. But इतनी continued failure के बाद अब यही कहोगे कि the bowlers know what plans they have versus Babar. मैं इसीलिए कहता हूँ ना. And he has been exposed. जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो कहते हैं कि हाँ I know what I can do. Exactly. वो इस रट से निकलते हैं. देखो good players वो होते हैं who experience a peak in their careers and they are okay. बाबर तो खैर अभी इस वक्त below okay है, मगर that's what a good player is. They experience one peak. Azhar Ali has a peak. ठीक है, he's a really good player. He's not too great after that peak, very bad after that peak, but he does experience a peak. He averages 42 as a first drop in Test cricket or 43. Good player. The difference between a good player and a great player is that the great player will reinvent himself and he will come back strong. यूनुस खान को मार संगा कारा. ठीक है, और बहुत विराट कोहली इन ओडीआईज तो कभी भी बुरा नहीं हुआ. ठीक है, टेस्ट में कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, अगर ओडीआईज में तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम. नो वन हैज स्कोर्ड मोर रन्स इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप एवर. सो ग्रेट प्लेयर की यही निशानी होती है. They bounce back, they reinvent themselves, they go back to the drawing board. And I feel like with Babar Azam, he might be an uber talented player who had loads of potential. He might not be the most intelligent player, and his staff keeps getting changed as well. There's that. Can't look past that either. मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता. But यही है, और मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता. It's a poor dismissal. Again. They've very clearly bowlers have worked this guy out. अब तो एनालिस्ट होते हैं, उनके प्लान्स होते हैं, वीडियोस होती है, अब तो पकड़ा जाना बहुत आसान है. If he wants to prove to the world that he's not just a good player who had a crazy peak and is a great player, then he needs to prove that. He's still 30. Very little time left. कह रहा हूँ ना, आप फ्लो में नहीं होते हो कभी. सही है, नजर आ जाता है कि अच्छा नहीं हो रहा यार, वो वाली जो मेरी कवर ड्राइव्स होती हैं वो नहीं लग रही, फ्लिक्स होती हैं वो नहीं लग रही, लेकिन यू स्टिल समहाउ मैनेज टू फाइंड अ वे टू स्कोर ब्लडी
सिंगल्स निकाल लो. कुछ करते हो आप यार. मैं आउट नहीं होऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया तो वो मैंने. कितना और करना है? मैं कैश इन कर लूंगा, जैसा शेहोप ने किया. उसने तो खैर टाइम भी स्पेंड नहीं किया ना. ही वाज टेकिंग अप द स्कोरबोर्ड. Babar was 9 of 23. Yeah. He was stuck over there. Yeah. And Rizwan ने क्या कितनी balls का duck की है? Golden डक. Rizwan was a golden duck. He goes first ball, shouldered his arms. Yeah. Leave कर रहा था, ball jags back in prodigiously, and that's something that Jaden Seals does. आपको पता होना निप चाहिए. बैका. Will crazy nip backer, Yeah. and it clips his bails. आप भी Knocks them तो over. प्लेयर्स को थोड़ा स्टडी करो ना कि वो क्या करते हैं. कुछ तो It's करो. a poor dismissal. ठीक है. Rizwan and Babar, अभी मैं Wisden का वो stat देख रहा था before this game. so low strike They're striking it like the 70s. 78 to 73. 78 to 75 था. Lowest in the world. अब वो और लो हो गया होगा. बाबर के लिए तो वही क्या होगा. रिजवान का तो गोल्डन डक. ठीक है. It is bad if for 2 years you are striking it under 80. So they are competing in that. हाँ, वो Lowest, आपस में- second वो lowest. उसमें- हाँ. वो It's really bad, and these two guys need to pick up their slack. I know, मैंने अभी with respect to Rizwan, I'm saying that he made the least amount of errors As a captain. as a captain. It's just the Nawaz bowling an extra over error, which I really think is Yeah. bad. But as a batter, golden duck, your team needs you. Now you're 8 for 3. Once you're gone. पिछले मैच में जो पिछला match परफॉर्मेंस तो- दी है सबको हाँ. याद पिछले है. मैच में 16 of 38 भी किसी को भूलना नहीं है. How is that even a reality in 2025? I don't understand. केसी कार्टी वैसे था. वैसे वो भी थे. केसी मगर कार्टी this ने- is Rizwan we're talking about, and you expect better things. Yeah. Like I'm saying, Oh, do we now? I don't know. Maybe this is it for him too. हाँ, But no, मैंने I tweet- actually feel ये मैंने एक ट्वीट किया था कल कि आई फील दिस माइट बी द एंड ऑफ द रोड फॉर रिजवान दी ओडीआई कैप्टन. Captain. Yeah. उसका मतलब ये था कि मुझे लगता है कि ये लोग चेंज कर देंगे. हाँ. उसका ये मतलब था तुम्हारा. हाँ. I would like I said, I am willing to give these guys another series. I'm fine with that. But आपकी अपनी राय होगी. मेरा I मसला don't want to बताइए- get back into that again. मेरा छोटी सी बात है. मेरा मसला पता है क्या है इसमें. I do not trust Rizwan the batter at this moment, but I do not trust anyone as captain as well. There's Yeah. that. Same. मैं इस मसला कंडर में ये फंसा है। हूँ. और पता है मैं उसको चैंपियंस ट्रॉफी में तो कप्तानी पे ब्लेम भी नहीं करा. वो तो एक अलग या चीज़. और न्यूजीलैंड वाली टीम में भी आपकी डिप्लीटेड साइड है, whatever जो भी. चलो ये वो that's a conversation for another This another loss, day. whilst his captaincy is Poor. pretty much okay in the last game. एक But गलती है. पहले दो पिछले में पहले series दो मैच को में थी. देखो। अब आप जाओ फर्स्ट ओडीआई रिव्यू पे जाओ, सेकंड ओडीआई रिव्यू पे जाओ. साद एंड आई आर वेरी क्रिटिकल ऑफ द कैप्टनसी. Yeah. देख लो जाके. Yeah. We're not protecting Rizwan, we're not peddling an agenda. I'm trying to say it as I see it. लेकिन इन तीनों मैचेस में with the bat हाँ. Rizwan just shat the bat. Yeah. हाँ. पहले वाले में भी gets to his 50 or 59 deliveries, then slows down. Slows down bro. Massive slow down. क्या 10 बॉलों पे 3 रन बनाए थे उसके बाद. So it's been bad going for Mohammad Rizwan, and pressure इन सब के ऊपर है. हाँ अच्छा उसके बाद रिजवान के बाद आगा सलमान. सलमान अली आगा. Cousin Sal, यार देखो 30 or 49 is bad, whilst he might be Pakistan's best batter. Poor. Yeah, even that. Did you see that 4? He just kind of punches the ball down the ground. हाँ. That's not convincing either. Yeah, He has उसकी शॉट ही ऐसी है. उसकी वैसे शॉट ही ऐसी, हाँ. पर चलो हाँ. there are 2 cut shots versus spin for 4 जो कि उसकी है ही shot. Yeah. There's just 3 boundaries यार, ऐसी भी कोई चीज नहीं है. 30 or 49 when he comes out, Pakistan needs some runs, हाँ. right? You're not going to just टुक कर तो ये मैच जीत नहीं सकते. Yeah. So even though he might be the best batter with 30 or 49, I Not poor. convincing I'm at still all. poor. not convincing, not a good game for him. मसला कजन सैल का एक ये आया हुआ है कि he hasn't been scoring runs lately. इस हाँ. टूर में तो बिल्कुल उसके रन नहीं आए. कभी ना कभी थोड़े ड्राई अप होने थे, उसको मैं I'm willing to give him some time. हाँ. कजन With him सैल तो is हाँ. one guy जिसको अभी मैं कुछ नहीं कह रहा. हाँ. और ऊपर से यार हसन नवाज is piss poor for his 13 or 40, मगर उसको भी मैं भी कुछ नहीं कह रहा. मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर रहा उसको ब्रो. नहीं जिस blame जिस पहली series है जिस आपकी. तरह आप फंसे हुए हो ना अब इतने यंग बैटर पे जो पहली 2 इनिंग्स बड़ा अच्छा खेल चुका खेला है. है. पहले 2 मैचेस में अपने डेब्यू सीरीज है. इस तरह का एक वो फेलियर जिस तो आता time पे भी है. आया He is a positive और that you take from this series. वो यहाँ से मैच जितवा भी नहीं नहीं सकता. जितवा नहीं सकता जितवा था. सकता था. और even though 13 or 40 looks really bad, fully excused हाँ. from my end. No Yeah. worries at all. Yeah. Hussain Hussain Talat. Talat, actually he bowls only 1 shit over. हाँ. I know 4 might be a bit too much, 4 जरा ज्यादा करा गया, हाँ. but 4 overs में he gives away 26 runs. उसमें That's a एक- better economy rate than the likes of these other guys. एक ओवर में 14 पड़े थे ना उसे उसमें. सेकंड ओवर था उसका जो 2 छक्के और 1 डबल मारा था. देखो Evan Lewis नवाज ने. से बेहतर इकोनॉमी है तलत की. नसीम से बेहतर है इकोनॉमी तलत की. Those are 2 guys जिससे वो बेहतर करा गया. I know he's not a wicket taking option. I think 2 ओवर्स एक्स्ट्रा करवा गया था जिसकी वजह से नवाज का एंट्री पॉइंट डिले हुआ है. वो वाले I पॉइंट agree, है. वो भी I'm fine हाँ. with that, हाँ, लेकिन- nitty gritty criticism. Then again उसकी bowling performance wasn't as bad जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. Hussain Talat डर bowling लगा 4 उसका. overs does not lose you this game. हाँ, नहीं. No, it He did gives not. away 26 runs. He bowls that one bad over जिसमें Evan Lewis इसको पेल देता है. हाँ. ठीक है. And I चौदह don't know run. why he was bowling short at times. हाँ.
didn't make any sense. But इस पेस पे एवन लुइस को शॉट तो नहीं यही स्टडी थोड़ा सा करना होता है he's cleaned up with the bat, 1 of 4. क्या तल्लत को मैं क्या बोलूं? रॉसन चेज तल्लत से ज्यादा और Arm बड़े ball. लोग थे इस टीम में जो उनको थोड़ी फाइट दिखानी चाहिए थी, तो मैं तल्लत को क्या तल्लत को क्या- तल्लत के पीछे नहीं पड़ इनको सकता. नहीं आप कुछ कह सकते हो Hussain ना Tallat Hussain- making his comeback, he was really decent with the bat, Bat. and Even with the ball. in the previous first ODI and second में भी ठीक था. ठीक था। हाँ तो क्या बोले उसे? नहीं क्या ही इस पे नहीं ज्यादा guys. कुछ मैं हाँ। तनकीद नहीं उसके करूंगा. बाद कौन था? नवाज. No. मोहम्मद नवाज यार really poor with the ball actually. He starts well. He starts really well. Starts really well. ठीक है, Yeah. कतरियां निकल रही हाँ. हैं, edges and all that. He bowls 7 consecutive overs in the middle overs. ठीक है, साइम ने 8 कराए, इसने 7 कराए हैं. He gives away none for 38 in 7 and I'm like चलो यार पता है 1-2 बुरे ओवर थे, बाकी ठीक है. Comes back and actually gets a wicket at the death. It's weird. He dismisses Gudakesh Moti and he only concedes 7 runs in that over. 7 runs and 1 wicket. I'm like, you know what, Nawaz? You've done great. तुमने 8 ओवर ही कराने थे, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई, क्योंकि साइम ने 8 करा लिए हैं. You're done with your 8 overs, 1 for 45. Brilliant. यहाँ पे रिजवान की गलती No, आती है और no, यहाँ पे नवाज. रिजवानी गलती आती है. हाँ. Abrar should be bowled out regardless of how many he goes for Yeah. because he's your best bowler. Nawaz bowls an extra over. He concedes 15 runs in that last over. Ends up with 1 for 69. Those are figure ruin. उसकी गलती भी नहीं है शायद. है उसके भी. figures ruin हो गए. है भी. थोड़ी सी गलती है भी. Obviously bowler हाँ. की गलती तो आएगी वो लेकिन आती है, हाँ। 1 for 69 overs is not convincing in conditions which are suiting you, which are aiding you, right? With the bat, what does he get? 23 of 28? I don't हाँ. even. I think unbeaten. Don't even care. इस bro, time तक about मैं- his batting performance. I think it was unbeaten 23 of 28. I know the game is dead, but he also gets lucky at the start. एक कतरी निकलती है, which goes for 4, which could have been a catch, but दूर थी वो थोड़ी. क्या इसकी बैटिंग को डिस्कस करना है एक ब्रो? चीज मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि कम से कम नवाज ने कहा कि चलो मैं थोड़े मार ही लेता हूँ. Still not good. He used his feet and smashed 6 down the ground लेकिन versus देखो spin. नवाज जस्ट बाय द वे टीम में इसलिए एज ए स्पिनर नहीं खेल रहा, एज एन As ऑलराउंडर an खेल रहा all-rounder, है. इस वाली में चलो मैं दे देता हूँ लेकिन इसे कुछ पिछली- मार्क्स, लेकिन इस टूर में तो उसने बैट के साथ कोच भी बैट लिया. से कुछ नहीं किया. वही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम he was like, okay यार, what's the point of hanging around? I'm going to use my feet. I'm going to smash the spinner. out हो और गया, Down the हो ground गया। for 6. और और एक उसकी क्या तुझे पता है, एक उसकी बस वो शॉट है, he makes some room, he हाँ. clobbers the ball through the covers. और- वो उसे कर दिया, not out गया. और क्या ही करना था उसने इस बैटिंग स्टेज में पे? बैटिंग में फिर मैं बोलूंगा, I personally feel Nawaz was Pakistan's best batter and not Salman Ali. That doesn't even matter. It doesn't bro. matter. वो हो जाए बेस्ट बैटर. The game was done. It doesn't matter. And 1 for 16, 9 overs is not convincing. So अच्छा, आगे अच्छा. चलो. Naseem Shah. ओए, नसीम शाह पे आ गई. Naseem Shah started off really well with the ball. Really well. Really well. He removes Brandon King in his second over. He's looking good in the power play. Yeah. He's bowling a tight channel. His accuracy is Yeah. better. His pace is up. Yeah. एक 142 delivery, Yeah, 142 clicks पे delivery. 141.9. 141.9 clicks पे इसने delivery कराई है. And he ends with 1 for 24 in his first 5 overs in the power play. I was like, यार Naseem Shah I'm is like, looking yeah, good, is यार. today the day? Oh. Are we going to be talking about how Naseem Shah is back in tomorrow's Same. podcast? That's what we're thinking. हम तीनों I साथ बैठे हैं. tweeted that too. ये discussion हो रही है, ठीक है? Tweet ना किया करो नहीं पहले. कहते. Jinx. Comes back at the 37 over mark, I want to say 38 over mark. Actually bowls really well at that point. Really, वो तो really बहुत- good. There is a scintillating reverse swinging Yorker, Oh, which खूबसूरत. sends Roston Chase back. हाँ. You know, Beautiful. knocks over his bails. उसमें बिशप की कमेंट्री भी कोई कमाल ही थी. खूबसूरत. Rolling back the years of Pakistan cricket, Yeah. fast bowling heritage और पता नहीं क्या कुछ हो And रहा है. at that कर point, दिया था. feels आ गई. Haifa हो when गया he bowls that, absolute seed, that scintillating Yorker and knocks over Roston Chase's bails, I'm like, today's his day. आज ये death में खाने वाला है. ओ भाई वो उसको ही वो खा खा गए. गए. In his last 5 overs outside the power play, he concedes 48 runs, takes a wicket, and in his last over, He's conceded 21. 21 runs are conceded and in his last ends up over. with the worst bowling figures. By In his career. In his career. 2 for 72 and हाँ. 10. यार बॉल रिवर्स भी हो रही है. सीमो तूने अभी विकेट भी ले लिया. How can you just lose the plot so quickly? That is his worst bowling figures in ODI cricket history. Really, bro. really disappointing because the accuracy was up शुरू में, the pace was up No. more than before. And it was favoring you at the end. And he was bowling those. अच्छा सिर्फ एक reverse swinging Yorker नहीं था. There were a few in there. ठीक है, but in the midst of those scintillating reverse swinging Yorkers, there was so much filth bowled that he ends up conceding 72 runs in 10 overs. 48 runs in his last 5, 21 runs in his last. I'm sorry, this is just not up to scratch. ये नहीं No, चल no, सकता. no, ये no. बिल्कुल भी नहीं ये चल नहीं ना सकता. ना Naseem Shah की regression is something that I personally did not see coming. मैं वही तो कह रहा हूँ 2025 में इस साल में Worst 3 bowling figures worst हैं bowling figures in his career आए There हैं you go. यार. This is the guy who's a prodigy. Yeah. Yeah. क्या कह सकते हैं? Hasan Ali.
Hassan Ali, again, he had Romario Shepard's figures in the first 5 overs. 10 runs conceded. इसी तो मैं कह रहा हूँ, Anna, how high do I even rank that? Because Romario is doing that. Romario is doing that as well. None for 10 in the first 5 overs. Romario is doing it against our batting lineup. ये difference आता है. जो भी है खैर, in the power play obviously is good. None for 10 in 5 overs is great in the power play. He comes back and he bowls a tight channel crowd in the power play. Yeah. Really good. He doesn't miss his mark in the power play at all. Comes back and concedes 50 runs in his last 5 overs. There are full tosses, there are slot balls, there are wide ones. I don't know. There's a 5 wides जो कि रिजवान ने भी मिस कर दी पीछे से. क्या करे? Ends with none for 16 10 overs. It's a poor performance. अब देखो नसीम शाह ये बॉलिंग करवा रहे हैं, हसन अली ये बॉलिंग करवा रहे हैं, इसमें कैप्टनसी की गलती नहीं आती. नहीं है. वो दुनिया का कोई कैप्टन हो वही तो मैं कह रहा हूँ. These वो are बेन स्टोक्स को ले आओ आप लोग. क्या करेगा वो? Skilled professionals, experienced pros, seasoned pros. If they are bowling filth at the death with a reverse swinging ball, that is not a captaincy issue. That's a player regression issue जो कि throughout the team आपको नजर आ रहा है. And you know what? The conditions suited them. They at the end. still shit the bed. You have conceded 119 runs for the loss of 2 wickets in the last 10 overs. Yes, sir. That is where you lost this game. I know the batting only scores, or the batters only score 92 runs. ये मैच आप पहले ही पहले हार हार चुके थे. Last player आ गया जी. Abrar. अबरार. अबरार एक्चुअली अगर हम रेटिंग्स कर रहे होते अच्छी ले जाता मुझसे क्योंकि he was unplayable in his first spell of 7 overs. He was unplayable. नहीं. Absolutely. समझ ही नहीं आ रहा. शे होप के अलावा कोई उसे रीड नहीं कर पा रहा सिर्फ था. शे होप रीड कर पा रहा था. केसी कार्टी couldn't pick Abrar throughout the series. Yes. At one point he had bowled like 6 overs for 5 runs or something like that. And I was like, Saadi क्या ये आज under 10 कर सकते हैं? Right. So in that first spell, Abrar removes Evan Lewis in his second over. Yeah. It's a brilliant catch by Mo Harris. And then he pins Casey Carty LBW in his fifth over. Going great. 7 overs, 10 runs, 2 wickets. Amazing. ठीक है. Comes back and does concede some runs. Bowls 2 death overs, concedes 24 runs. So his figures overall go to 2 for 34 and 9 overs. Should have been bowled out. मैं भी agree करता हूँ. आप ये बिल्कुल साथ हूँ मैं यहाँ पे. सही है. Again, him not bowling out does not cost Pakistan the game. ये भी मैं वापस जिक्र करूं. And if I look at him overall in this series, I was very impressed with Abrar's pace variations. Pace variations बहुत कम. एक 90 की क्लिक्स पे जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, एक 76 किलोमीटर पर आवर जा रही है. He was clever actually. He was giving flight, he was looping the ball as well, very clever, and he was getting heaps of turn yesterday. काफी turn मिली है उसको. ठीक है. Mad accurate. Abrar बहुत accurate. पहले 7 ओवर में 10 रन कंसीड किए, 2 विकेटें लिए यार. बिल्कुल. हाँ तो He was बहुत. decent in both games. नहीं, he was really good. He was good. I think Abrar Was our best bowler in this series. Abrar was the best bowler in the series. Hassan Nawaz was the best batter in the series. Yeah. इसमें कोई शक कोई नहीं शक है. नहीं. And इन दो लोगों को मैं fault भी नहीं और करूंगा. हसन नवाज के बाद I feel Hussain Hussain Talab was Talab. the हाँ. second best batter. Yeah. I know Saad and I in the last podcast said that maybe this is now not the time to play both of Sufi Mac and Abrar in the same game because final आ गया. But I will say one thing. 3 T20Is versus Bangladesh. 3 T20Is versus the West Indies. 3 ODIs versus the West Indies. 9 games, 9 opportunities to play both frontline spinners And you did in Sufi Mac and Abrar in the same game, and you don't do it. That I'm pissed about. Yeah. I am. ट्राई सीरीज में ट्राई कर लो यार, हम तो यही कहेंगे. और अब कर भी लो, अब आएगा फिर से यूएई में, फिर आपको कंडीशंस मिलनी है. तब भी अगर आपने सूफी मैक और अब्रार को, if you don't try them in the same game, then God be with you. they won't. They won't. They aren't even thinking about that because they want to play batting up until 9. Anything to add, mine? Yeah. मगर अब्रार क्या ही Done. We're done. You're done. Yeah, I'm done. Mine is done. I'm done. Damn, dude. मैं तो excited हूँ, मेरी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं. हाँ Plus, तो तुम एक्साइटेड हो ना, हाँ, हमें अभी हमारी जाके जो छुट्टी काम करना है. it's funny because अभी हम आज इस तरह का हमने पॉडकास्ट किया. कल आपको एक और मिल रहा है. Complete opposite. Complete opposite. कल 14 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आज Yes. आपको एडवांस में कर देते हैं, कल भी आएंगे आपकी स्क्रीनों पे आ सामने. जाएंगे हम आपके स्क्रीनों पे. And we'll give you consistent content even when I'm gone. There's a football one. There's another auction that we've done. तो तुम आइटिनरी दे दो ने. यहाँ तक वैसे किसी ने सुनना ही नहीं. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम, माहिन, मुझे, नोमी को, काशिफ को भी, आज काशिफ भी बैठा हुआ है, काशी को भी फॉलो करो. हर जगह हर बंदे को सब्सक्राइब कर दो. हमारी बूथियां पसंद ना आई हो तो हमें Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart Radio, Pandora, Pocket Cast, Podbean, Castbox, Podcast Addict और जहां हैं हम वहां पे जाके सुन सकते हैं. उसके अलावा यार मिलते हैं नेक्स्ट. याशियां करो, मजेजेस करो यार, जश्न आजादी मनाओ. टेंशन नहीं लेनी. क्रिकेट तो आती जाती रहती है, हारते ही रहती है पाकिस्तान. They are consistently shit at this point. And just come to terms with the fact that your cricket team right now is mediocre. Yeah. यार फैंस को
फैंस को नहीं आपकी कह नहीं सकते कह और आप सकते एक्सपेक्ट वैसे नहीं कर सकते उनसे फैंस तो फैंस उनका तो दिल होगा जीते पाकिस्तान। अब जब चेल्सी फिनिश करती है आउटसाइड ऑफ द टॉप 6 तुम देखते नहीं हो हाँ तो फिर तुम किस तरह कह सकते मगर मैं अब क्रिकेट में काम भी तो करने लगा, बट यू हैव हो? लेकिन फिर अगले सीजन फिर तुम आ जाते हो कि नहीं हम जीतेंगे पॉइंट टेकन फैंडम तो यही होती है. इट इज डिसअपॉइंटिंग, यू हैव एवरी राइट टू बी डिसअपॉइंटेड, दैट्स फाइन. Keep supporting. ओके गाइस बाय बाय बॉय कैसा